तो फिर स्कैम के साथ करेगा क्या? तो हम्म, और गाइस, क्या हालचाल सभी के? व्हाट्सअप एवरीवन। हेलो लाइफ दीक्षित जुनिड। और बताओ भाई, क्या हालचाल? एक सेकेंड, आप लोगों को स्क्रीन ही नहीं दिखता होगा। एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। ऑलराइट। क्या हो गया भाई? माइक ऑफ क्यों रखे हो? हुआ क्या? चालू हुआ क्या भाई? इतना नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं क्यों? नहीं, चालू नहीं हुआ भाई, खाना खा रहा था। कहाँ का था कोड? क्या क्या? हाँ, कोड तो नहीं। अबे तूने यार, शिट, मेरे को टेलीग्राम पे चाहिए लिंक। व्हाट्सएप तो है ही नहीं पीसी में। यही है ना शायद से। रुक जा, 2 मिनट डाल दे रहा हूँ। कितना टाइम है? स्टार्टिंग से नहीं दिखा रहा है अभी तो। होगा अभी 10 मिनट टाइम हो। बॉबी भैया गरीना ए टास्क सुन ना, कर अरे रहे सर, हैं, मेरे को वो भेजते हिंदी का लिंक इस पे भेजना रे, टेलीग्राम पे भेजना। भेज रहा है 1 मिनट। मोबाइल लिंक भेज 2 मिनट। 45 मिनट्स, नाइस कोडिंग। व्हाट्सअप लाइट्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैच शुरू नहीं हो रहा है, 2 घंटे लगा दिए। अरे 2 घंटे नहीं, कितना लेट है अभी ये? तो नहीं, 1 बजे का टाइमिंग था। आधा आधा घंटा 35। लेट है रे। आधा घंटा। गिरीना का भी कर रहा है वॉच पार्टी। एलू प्लेऑफ शुरू नहीं होने वाला। अरे होगा, रुको गाइस, वैसे भी क्या है, इनको टैग कर देते हैं। अबे बफर क्यों हो रहा है? व्हाई इज बफरिंग? टेलीग्राम में देना है देखो। कौन सा, ये वाला क्या, मोबाइल स्पोर्ट्स? अरे यार, इसका डीपी कैसा है? कौन सा वाला है गाइस? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ओ भाई, आई थिंक सो यही है। या इसको कर देते हैं, छोड़ो। ऑलराइट। चेक कर, को दिया। गेम चेक कर। यूपीआई आईडी। हम्म। अबे ये कौन सा क्रोम खोला मैंने? फक, ये वाला, ऑलराइट। अबे बफर क्यों हो रहा है भाई? अच्छा, सबका हो रहा है क्या? वही। विच साइड आर यू ऑन? क्या बोलते हो गाइस, कौन सा करना है? बोलो। तुम जो बोलोगे वो करेंगे अपन। नेट चल, मेरा तो चल रहा है नेट।
अरे ये लोग का ही कुछ तो गड़बड़ है but not. वो भी देख रहा आरएनटी ही अच्छा है। देखो मैं बताऊं ना कौन जीतेगा आज। आह, भाई 200 रुपये लगा दो सुन मेरे देखो वेटलिटी दो पे। ही कंपटीशन है यहाँ पे, सच बताओ सबसे ज्यादा मेरे को जो लगता है ना, आरएनटी या रिबर्थ में से मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगी। देखो क्या लग रहा है रिजल्ट। भाई प्रोबेबली देखो, अगर मेरे को लग रहा है ना जिस टाइप का ब्रैकेट है, ब्रैकेट का नाम मेरे को लग रहा है कॉर्डल जाएगी। ओ भाई 70%। अच्छा। ओ भाई विटालिटी जाएगी। अरे क्रिटिकल रिबर्थ पे बुट कैंप है या नहीं अभी? नहीं 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 नहीं। और ओके। निर्वाणा वर्सेस क्या है? रिबर्थ वर्सेस तो ये है ना शायद, क्या बोलते हैं, अरे भैया, इनिग्मा। निर्वाणा वर्सेस एनिग्मा। अच्छा। देख देख पहला तो फिर आरएनटी जीतेगी ऑब्वियसली, है पिंग एडवांटेज वगैरह तो वो तो रहेगा ही। स्टिल देखते क्या होता अरे है। 4 टीम जाएगी भाई, लिखते हैं। जीतेगा तो रिबर्थ ये भाई सब सारे लोअर आइए। ब्रैकेट में जाएगी। Nice. मेरा फुल सपोर्ट है भाई, आरडीएक्स को जीतेगी स्टेज 4। 8 में से 4 टीम चाहिए ना स्टेज 5 के लिए। ओके। हाँ। भाई आरडीएक्स जीतेगी क्या स्टेज 4। गोडेल वाइटलिटी आरएनटी कुछ भी कह नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। गॉडेल और वाइटलिटी तो ये तो फिक्स है रे। भाई तुम देखो ना अगर अभी ये लोग का आरडीएक्स क्या मतलब मार रही है। ब्रैकेट अगर ये रहेगा ना, ब्रैकेट में देखा था ये लोग के, आई थिंक सो लास्ट कोई टाइम क्या सामने था नहीं ना, है। जैसे पुरानी गॉडल जो थी दांते वगैरह की, हाँ ये लोगों को ब्रैकेट में इंसीडियस दे दिया था। अरे जो दांते वगैरह की पुरानी गॉडल थी, वॉर्टेक्स ये सब, हाँ हाँ। उनको लोअर ब्रैकेट में इंसीडियस दे दिया था, लोअर में नहीं शायद, हाँ इसमें फाइनल्स में। अच्छा। तो वो पहले ही बाहर हो गई थी, इसलिए टॉप 4 में आई भी नहीं थी स्टेज 4 के लिए क्वालिफाई, और स्टेज 5 के लिए 3 टीम्स गई थी। टीआर को मिला था एक ब्रैकेट, हो गया उनका लाइक स्पॉट ऑनलाइन लाइन की वजह से। ओके। एनिग्मा कैन आल्सो विन या। हाँ एनिग्मा भी है, एनिग्मा भी खेल रही निगमा है भी अच्छे। बहुत अच्छी खेल रही है हाँ भाई, वही मजाक खेल रही है करके बोल, अच्छे। बहुत अच्छी खेल रही है। अभी तो कंपटीशन में है ही नहीं ना ये लोग देखते हैं भाई, देखते हैं क्या ये होता है। अभी कुछ रियलिटी भी में कह बोलो नहीं तो सकते, कभी भी टीम एमपी कुछ से भी हो बेटर जाता है है अभी भाई। नेक्स्ट। कितना 2 मिनट में चालू हो रहा है, ठीक है। गॉडल लूजर ब्रैकेट में जाएगी फिर से। अरे नहीं भाई, देखते हैं क्या होता है। और कौन कर रहा है लाइव? आई टू पे कर रहा है। एक ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया अभी स्टार्ट हुआ है, मॉन्ग कॉन्ग भी चलेगा देखना, जो विटालिटी का आएगा मैच। ये कौन कर रहा है इसका? अरे भाई क्या कंफ्यूज है, ये बॉबी कर रहा है क्या जो 400 के वाला है? 400 के? 400 की क्या वॉचिंग बोल रहा है? नहीं नहीं वो सब्सक्राइबर्स। अरे उसमें दोनों में हिंदी एक हिंदी हिंदी वाला है कौन ना कर रहा और है? एक टू ये नूब फॉर यू कर रहा है राइट? हिंदी। नहीं पता नहीं, ये सिल्वा तो बोल रहा है मेजर बीस्ट कर रहा है, अब देखने दो। मेरे को लगा टूनू कर रहा, देखते हैं। ऐसा मैं तो फास्ट धड़ाधड़ कॉपीराइट आने वाले हैं ना अभी। भाई टूनू ऊपर यू करेगा तो भाई बिग फैन। अबे यार मेरे को बिटरेट कम रखना चाहिए था। रुक जा, अपन विजन भाई को बोला था क्या कर रहे हैं। भाई बुला बुला वेस्ट काट कर। नहीं देंगे शायद को, अबे देंगे भाई, क्यों ना देंगे। चलो हो गया शायद, चलो क्वालिटी बढ़ाते हैं अपन थोड़ा भी।
पेंटिंग तो बढ़िया की है जो भी है। अरे अगर YouTube वाले ट्विच पे का अगर ये करेंगे स्ट्रीम तो कॉपीराइट पड़ता है क्या? इसका 25 का वॉचिंग आ रहा है, इसका एक 1K का आसपास जा रहा है। भाई 1K वाला में सब ग्लोबल हो गया है। दोनों का चालू नहीं हुआ भाई अभी तक तो। एक का अपन कम कर देते, दोनों वाला लोड ज्यादा हो रहा। बट अबे और 2 मिनट, अबे मजाक चल रहा है क्या? वो बार बार टाइमर दे रहा है। अरे करीना वाला को हो रहा है ना लैग। अभी उधर आई थिंक वही कास्ट करेगा अबे यार इंग्लिश रिवर्स वाला। के लिए खराब लगा यार मेरे को। कैसे खराब? 9% वोट दिए बस। भाई मुझे बहुत ही रेवेनेंट को निकमा हो जाता 68% मिला है भाई, मतलब ओ भाई फैन बेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसका तो। सबको क्या करना है, कुछ लोग का बताओ ना कुछ की। अबे मेरा नेट चला गया क्या? क्या सीन है? किसके पीसी पे? आ खुद का पीसी है भाई। ऑब्वियसली 1080 भी कर नहीं। देख गॉडेल और एनिग्मा होगी क्वालिफाई। अरे नहीं रे, अरे वाइटलिटी होगी रे, मैं बता रहा हूँ ना तुम लोग को। वो जो पहले थी ना भाई, वाइटलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई अभी। सी अरे देख ले भाई, बता रहा हूँ ना भाई, जो है वो है ही। भाई गॉडल विटालिटी को एक मैच फ्री लोग करके मजा आ गया। 250 भाई, यही मजा चाहिए। जो लोग क्वालिफाई नहीं होते वो नहीं बोल सकते कुछ। अरे बाप रे, और किस्मत नहीं था ना भाई। क्या करे। अबे कितना टाइम ले रहे भाई ये लोग चालू करने में। इधर हुआ क्या? और इधर हो गया, चलो रुक जाओ इसको बंद करते हैं फिर। किधर हुआ चालू? इंग्लिश वाले में? हिंदी वाले में चालू हो गया। हिंदी वाले में होंगे। अबे इसको माइक दे दो भाई कोई अच्छा। यार क्या किया? अबे माइक दे दो यार। 10 रुपए का मूड माइक खराब दे है। दो यार इसको। मूड खराब हो गया। हाँ Hello everyone, I'm Nanda Kishore. You probably know me as Abyss, and I'm from Team Revenant Esports. My team is playing Call of Duty Stage 4 from Indian region. My name is Akshan Madani and my gamer tag is Argan and I play for Team Vitality. My name is Charsha. People know me as Learn, and I'm the IGL of Koller-Masterliquid Esports. My name is Vaibhav and my gamer tag is Viz, and I'm from Elitex. My name is Ayush and my in-game name is Dope and my team is Nirvana India. My name is RDX and I play for Team RDX. I am Abhishek Nagar. My gamer tag is Enigma Abhis and I am on Team Enigma. The biggest difficulty for our team was getting all the players together and taking out time for practice. It's been a month for us and we've been focusing to win. Fucking top-notch management. Oh, that's only bro. These are sponsoring man. Balancing college Yes, and bro, the I would game have. has been pretty hard. At least, bro, keep the good mic. Most of our day, and then we come back home, take a bit of a break and practice. Setting the team synergy has been challenging from stage 3 up until now. Our biggest challenge to get into stage 4 was competing with top teams. My team's biggest challenge to get into Stage 4 was Revenant Esports. Biggest challenge was definitely few teams like Vitality,
Revenant esports, Enigma Gaming. My team will win stage 4 by putting that extra effort needed into the SNDs. We are pretty sure that we'll win stage 4 easily, but our main focus is stage 5. We're all giving our full into this World Championship, and we are making new strategies. I think we can qualify for stage 5 and win the World Championship. Our plan डैडी for अभी stage पोहा 4 अभी is सर quite भाई simple, is to क्या focus चाट में चल and रहा है work on इधर ourselves. If we do not make any mistakes and play our game properly, then I'd say that is Where the enough to brand's have an blurred. edge over अरे बाप every रे other कौन team. है रे केशव सिन्हा लीनू भाई इसका Try फेस to देखा stay calm and किसका? handle the situation इसका accordingly. इसका We just elite X reset after हाँ every match देखा ना and map which we play so Right. that we can focus on the next one फेस and पे give कुछ it नहीं our होता है best. भाई The five of ये us are छोड़ो all फेस पे very क्या good friends, so we always keep motivating each other, and there is हाँ no like pointing fingers when भाई someone goes शांतन wrong. ओपी At भाई some point, we don't say we मजाक lost or बैठ के we बोल won रहा because of you. बेचारा This सो is the रहा team, है but My team deals with pressure by practicing daily, focusing on one goal, and which is to अभी win इतना the stage उदास 4. क्यों है Many ये of our players अर्गोन are new, like there is my and two more भाई players शांतन का full देखना World शांतन उससे भी Championship ज्यादा and है has gone तो this ये far देखना for the first time. So शांतन there's पर a lot of pressure वो that is देख building upon the team. So my team Godlike Esports is gonna be playing stage 4 from India region. Make sure to support us. Root for us. We are friendly अरे next नमस्कार region. नंदू We'll पाटिल try क्या our म्हणतो level best to qualify for काय stage चाललंय 5. करण शर्मा Fans to support our team इलू because भाई we are 204 one of the का माइक underdog स्पॉन्सर कर teams. दे अरे भाई कर देता भाई क्या माइक है यार फटे वाला We are a relatively new सीरियसली team, ब्रो and this is our first time that we have made it so far into a World Championship. It's a World I think the Championship. support will be beneficial for us because it will keep us going. Fans should support us as टाइम we पास are कर the रहे कॉडम underdog वाले in the stage 4 and we have made it ना ना here इट्स इम्पोर्टेंट by ब्रो लाइक grinding the game. ये सब होना Fans चाहिए should एक्चुअली definitely support our team because we are trying our hardest to be the #1 team in our region. I feel like everyone should support our team because we are the dark horse of the Indian community, but that is mainly because we are a lot more than what we have showed you before. I promise you, keep supporting us and we will show you our best. That was all of our amazing talented team who were fighting out for the grand prize that will be converted into stage 5. I wish our viewers a great time ahead as we move forward to reach playoff, and this is your boy Tunu for you signing off. पांच रीजन They're gonna double stack it. Hangs out the cats over the top. Bang! The Call of Duty Mobile Regional Playoffs are here. Concussion comes out, but the death machine is good for 3 for the clutch. Over the next 2 days, we will showcase the 8 best teams in India. कान के पर्दे What's फट on the गए line, you ask? सर्जरी स्पॉन्सर कर दो $75,000 ठीक है भाई and a ticket to Stage 5. Grab your phone, get your loadout, and strap in. The Call of Duty Mobile World Championship Stage 4 Regional Playoffs starts now. अरे इंग्लिश चैनल थोड़ा पीछे स्टार्ट चल हो रहा गया है हिंदी अरे हिंदी स्टार्ट हो गया हाँ देख रहा हूँ हिंदी देख एंड रहा हूँ स्वागत है आप सबका यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी अबे मोबाइल ये के कौन है वर्ल्ड चैंपियनशिप राक्षसी? सिर्फ 2 दिन का क्या सफर देखती है है भाई? लेकिन वो 2 दिन के अंदर हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी वो टीम्स हैं जो इंडिया को आगे रिप्रेजेंट करने वाली हैं उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमारे पास बढ़िया दिख रहा है ये बंदा बढ़िया दिख जरूर रहा हमें मिलने वाले हैं पर अबे मेजर बीस भैया and मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं टू वंडरफुल पर्सनालिटीज जो आपको जरूर पता होना चाहिए वेल वन ऑफ देम तो आपको गारंटेड पता ही होंगे जो अच्छे प्लेयर हैं Phoenix and then we have Major Beast as well so again welcome to this wonderful desk and उसके साथ साथ कैसा फील हो रहा है आपको मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और काफी ज्यादा मजा आने वाला है फाइनली अ गुड माइक ब्रो इतना ज्यादा कूल स्टूडियो है ना मजा आया एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है टू बी ऑनेस्ट बिकॉज ये इन टीम को हम काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं और इतने टाइम से साल भर इन्होंने ग्राइंड करा है और ये एक ऐसा समय है ना जहाँ पर इनको अपना 100% मेडल प्रूव करना पड़ेगा एब्सोल्युटली आई मीन एग्जैक्टली बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हूं मैं और मैं देखना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये 2 दिन का जो रंगमंच हमारे सामने आ चुका ना मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया को भारत को उसका ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा इस 2 दिन के अंदर कि कौन आगे जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला है अगेन जैसा हमने पहले भी बताया कि 8 टीमें जरूर यहाँ पे खेलने वाली हैं लेकिन उनके अंदर से सिर्फ 2 आगे बढ़ेंगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी इन 2 दिन के सफर के अंदर उसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द ग्लोबल फॉर्मेट एंड ग्लोबल फॉर्मेट की जहां पे बात करें तो यस हमने इंडिया की तरफ से तो बात कर ली कि यस आगे 2 टीमें जरूर बढ़ेंगी फीनिक्स बट देन आल्सो वी हैव टू कीप इन चेक ऑफ आवर कंपटीशन जी हां एनए से 3 टीम आएगी फिर यू से भी 3 टीम आने वाली है लैटाम रीजन से भी 3 टीम आएगी चाइना एंड जापान से 1 और 2 रिस्पेक्टिवली टीम आने वाली है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप कितना ज्यादा तैयार है अपने कंपटीशन के लिए स्पेशली हम सबको पता है हमारी रीजन से
2 टीम्स आने वाली, बाहर के रीजन की ये चीज अच्छे से इंडियन रीजन 2 टीम, वहां से कौन सी टीम आ रही है, कौन किसको हम फेस करने वाले हैं। हां दो तो है। एंड उसी के साथ में ऑफ कोर्स हम ग्लोबल स्केड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। गाइस क्या लगता है कौन रहेंगे 2 टीम? दर्शक जरूर इसको बहुत ज्यादा अच्छे से नोटिस कर लीजिए, और डाल दे ये लोग से हमारे ओपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे एंड पता चल मैं तो भाई जाएगा निर्वाणा को वोट उनका क्या पलड़ा भारी है कि नहीं हमारी टीम के अगेंस्ट में। एग्जैक्टली कितना ज्यादा पलड़ा इसे भारी है वो बोलता देखने बॉल को डाल दे यहाँ पे भाई। हमारे सामने आ चुके हैं लैटिन अमेरिका, हमारे सामने इंडिया के यहाँ पे कुछ जो शोज है, जो मैचेस है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आज ना वो रंगमंच है, वो एक प्लेटफॉर्म है, अगर आज अपना बेस्ट दिखा दिया तो कहीं ना कहीं कल अपने ऊपर गर्व करने का महसूस होगा। व्हिच इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू इनफैक्ट। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे हम बात करते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट भी आ जाता है। निकल के आई है यहाँ पे 8 इंडिया की, जिनमें से सिर्फ 2 आगे बढ़ेंगी, यस दैट इज कंफर्म्ड, लेकिन प्रेशर पॉइंट यहाँ से पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। एंड वो वाला जो सफर है, जो ये पूरा का पूरी जो इनकी राम कथा रही इतनी सारी लंबी चौड़ी, वो हमारे यहाँ पे रोड मैप से पता चल जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट वीडियो। The Call of Duty Mobile World Championship is back with Stage 4, the regional playoffs. Watch the best teams from all across the globe fight it out for their share of a $2 million prize pool and a spot at the World Championship Finals. This is unbelievable. 3 stages are complete, and now it's elimination time. अबे क्या है ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे भाई? अबे पता है भाई हम लोग को। चालू करो गेम देखना है कौन कैसा खेलेगा। Day 2 teams face a double elimination bracket. Win and move on to the next round. Lose and go down to the lower bracket. Lose again and you're eliminated. Only the top team from each region will make it to the ultimate stage. ये गए साल के हाइलाइट्स। World Championship Finals. 40 teams, 5 regions, the fiercest. अरे भाई पता है 5 रीजन्स। Call of Duty mobile competition. वो स्ट्रीम भाई वो YouTube चल नहीं रहा है, लैग हो रहा है मेरा भी। पेंटिंग देख के। All starts now. बस पीसी लैग, हाँ बढ़िया, बफरिंग भी सारे ओके। अब इस वीडियो से ये तो क्लियर हो गया मुझे ईस्टर्न फिनिक्स दैट किस तरीके का सफर रहेगा। वहाँ पे हमने ये भी देखा कि उनके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर वो पहला गेम हार भी गए BF5 वाला तो आप लो ब्रैकेट में जाओगे, वहां से भी आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर वो मौका गवा दिया फिर अगले दिन पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देती है कि अगर आपने एक बार गलती कर दी ना फिर उसको दोबारा दोहराना नहीं है, राइट? विच इज द बेस्ट थिंग। प्लस 8 टीमें हैं और इन 8 में से जैसा कि आपने बताया सिर्फ 2 आगे बढ़ने वाली हैं फॉर द वर्ल्ड स्टेज, लेकिन अभी भी 2 दिन है, ये पता लग जाएगा, बहुत टाइम है हमारे पास। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये कि कौन अपनी विनिंग स्ट्रीक आगे रखता है, ये स्टार्टिंग से ही बता देगा कि भाई हमारा स्टार्टिंग से डोमिनेशन है, हम कोई मैच तरीके से नहीं हारने वाले और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप हमें गिरा सके। उस टीम के ऊपर मेरी खास नजर रहने वाली है और एक और टीम के ऊपर मेरी नजर रहेगी कि कौन एक बार हारने के बाद ऐसा उठता है कि मतलब फिर उनको कोई हरा नहीं पाएगा। तो ये 2 कौन सी टीम बनेगी, मैंने जो टाइटल देना चाहता हूँ कौन सी टीम लेके जाएगी, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। I mean, भारत की, हमारे पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ टीम हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड जब आपस में कम्पीट करेगी ना, जो इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलेगा, उसके लिए तो मतलब दिल जो है वो बहुत ज्यादा बेताब हो चुका है। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी टीम्स की, अगर हम बात करें RDX ऐसी टीम का, जो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा एक सरप्राइज एलिमेंट हमें दिखा सकती है यहाँ पे। हम जानते हैं गॉडलाइक के बारे में, हम जानते हैं वाइटैलिटी के बारे में, हम जानते हैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा रेवेनेंट के बारे में भी। लेकिन अगर हम बात करें उस टीम की जिस टीम ने कहीं ना कहीं अपना अभी तक जिस मतलब कहीं से उठ के आई है टीम, एंड वोला आपको देखने को मिल रहा है कि सब इंडिया की बेस्ट टीम के साथ में कंपीट कर रही है। एंड हमें आज यहाँ पे एक नंबर 1 गेम प्ले जो है वो दिखाने वाली है। एब्सोल्युटली। अनुसे के साथ में हम यहाँ पे अगर मोटिवेशन की बात करें तो वहां पे हमारे पास में प्राइस पूल भी आ जाता है, वेरेन जो पहली टीम रहेगी वो $30,000, हम डॉलर्स के अंदर बात जरूर कर रहे हैं, $30,000 अपने साथ लेके जाने वाली हैं। एंड देन जो सेकंड टीम रहेगी वो उनके पास में रहेंगे $15,000। उसके साथ साथ जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते रहे तो ऑफ कोर्स फिनिक्स एंड मिडबीस सारे की सारी टीम्स को यहाँ पे प्राइस पूल का थोड़ा सा तो उसके अंदर होएगा, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये होगी भाई कितना डॉलर दे रही है फर्स्ट को, $30K तो वो बहुत into 22 लाख एंड उसका 22 लाख 50 ऑब्वियसली बन जाता है। 30% टैक्स देगा, सबसे पहली बात अगर आप उसे 15,75,000 आएगा, टीम ऑब्वियसली उसको एक्सप्लॉइट करेगी, कोई भी ओपोनेंट टीम यही चाहिए। एग्जैक्टली राइट। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी को भी दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं किसी को, हर टीम को कुछ भाई गॉडल बन जाओ, वो सही लगेगा। एब्सोल्युटली। उसके साथ में हम फॉर्मेट की तरफ जरूर बढ़ेंगे। तो फॉर्मेट की अगर जैसे बात करें हमने वीडियो में भी देखा क्लियरली वहां पे जो पहला दिन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी 8 का प्राइस पूल कम कर दिया ना, लास्ट टाइम $25 फाइट की जरूर रहेगी यहाँ पे सीरीज, लेकिन अगर वहां से आप पहले गेम हारे तो आप लो ब्रैकेट में गए, और अगर वो भी आप हारे
तो फिर तो जैसा मुझे बीच ने बोला आप घर गए। एग्जैक्टली 80 हो गया ना $1 अब 80 हो गया। कोई भी टीम ये नहीं चाह रही होगी, सब के सब यहाँ पे आज उठे हैं एक मन में लक्ष्य लेके, एक टारगेट बनाकर कि यार आज जो हम खेलने वाले हैं ये कुछ सेकंड्स, ये कुछ लम्हे हमें पूरी जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। एब्सोल्युटली डेफिनेटली एग्री करूंगा उससे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 8 टीमें स्टार्ट कर रही हैं और सिर्फ 4 टीमें कल के दिन बढ़ेगी। इसका मतलब 50% हमारा कंपटीशन आज ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ना आप उन 4 टीमों में से ना हो जो कि आज एलिमिनेट होंगी। बट अगेन अगर हम एक अच्छे नोट के साथ स्टार्ट करें तो हमारे स्टार्टिंग का पहला मैच कैसा रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसा हमारा पेस स्टार्ट होता है इस रीजनल फाइनल्स का, बिकॉज देखिए एक धमाकेदार स्टार्ट चाहिए तो हर किसी को पता है। BO5 रहेगा मसाला जी, मसाला तो मतलब बहुत पसंद है हमें ऑब्वियसली। एग्जैक्टली एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज़ उसी से ही थोड़ा एनवी वर्सेस आरएनटी गेम है अभी है क्या बन जाता है। उसी के साथ में अगर हम यहाँ पे फर्स्ट राउंड्स की बात करें तो ब्रैकेट्स आया, विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू द टीम। इनिग्मा वर्सेस रिवर्ट दे दिया भाई, दोनों एक ही क्लाइंट की लाइन है। 8 टीमें जरूर हैं। जो पहला हमारा गेम हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे मेजर पीस विल बी निर्वाणा इंडिया अगेंस्ट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। तो इन दोनों में से आपकी क्या टीम पिक रहेगा? ऑलराइट, ये काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया मेरे से लेकिन जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं जानना चाहूंगा रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। मुझे इनका पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है कि हाँ बढ़िया खेल सकते हैं। निर्वाणा को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज़ अगर यहाँ तक पहुंची है अबे एट अ टाइम देयर विल बी ओनली वन मैच ना, कुछ तो गारंटेड पहला तो यहाँ तक अभी तक पहुंचे हैं। एंड अगर पूरे शेड्यूल की अगर हम बात करें या ये लोग ऐसा करने वाले हैं एक टाइम पे 2 मैच लेंगे अलग-अलग टीम का। लास्ट टाइम जैसे ही करेंगे। अबे क्या पागलपंती है जो उसके बाद में जो वो थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। रहेगा एनिग्मा गेमिंग मतलब ही नहीं है उसका कुछ। फेनरिक्स रीबर्थ। सो फीनिक्स, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इन 4 टीम्स के अंदर जी हाँ आपको क्या लगता है कौन सी टीम्स लो ब्रैकेट में जाएंगी? देखिए चारों तो सर्वश्रेष्ठ है, पहली बात तो है हार जीत तो ऑब्वियसली चलनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस जितना मैंने सारी की सारी टीम्स को देखा है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स जैसे कि यहाँ पर मेजर भी मतलब बात करी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है काफी टाइम से यू नो इसमें भी ये कटेगा ना रे टैक्स कटेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर खेल रहे तो साथ में खेलते हैं, एक अलग कंपाउंड में खेलते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने का ज्यादा अच्छा मौका मिलता है। और इनफैक्ट अब ये भी डिस्कस कर पाते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो और हम क्या चाहते हैं और ये नो सारी चीजें एक साथ उभर के आती हैं। अब हम सबको पता है निर्वाणा ई-स्पोर्ट्स अगेन प्लेयर्स भले पुराने हैं लेकिन इट्स अ न्यू फॉर्मेशन। इनमें भी बहुत ग्रैंड करी है 4-5 दिनों से। कई बार हमें देखने को मिला है कि एक जो बिल्कुल परफेक्ट टीम होती है ना वो तोड़ सकती है आपकी सारी स्ट्रैटेजी। तो आई एम ऑफ फॉर रेवेनेंट एंड एनिग्मा। अगर हम टीम्स के बारे में बात करें तो लेट्स गेट इंट्रोड्यूस टू द टीम्स देमसेल्व्स एंड जो यहाँ पे लाइनअप रहेगा उसको भी देखते हैं, परखते हैं कि क्या यहाँ पे चेंज हमें कोई देखने को मिलेगा, क्या चेंज की जरूरत थी भी कि नहीं। मेजर भी एग्जैक्टली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की तरफ से आते हुए आरएनटी, एबिस, ऑयल, ज़ायरो, बॉन्ड्स, जी-शॉट्स। मैं बता रहा हूँ कि ये जिस तरीके से जो प्लेयर्स मुझे यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं जब अपने मैदान में उतरेंगे ना, मैं बता रहा हूँ अपने नाम के परचम जो है वो लहराते हुए दिखाई देंगे। हम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स से तो परख चुके हैं, उनके ओपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे निर्वाणा इंडिया जरूर इनके अगेंस्ट खेलने वाली है। एंड वहाँ पे अगेन वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइनअप, जैसा फीनिक्स ने भी वही बात करी थी दैट अगर हम एक्स फैक्टर की बात करें तो मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निर्वाणा इंडिया से। डेफिनेटली आई एग्री विद दैट बिकॉज देखिए कई बार क्या होता है जब आपको पता नहीं है कि सामने वाला कंपटीशन क्या करने वाला है आप सोचते हैं कि भाई ओके नहीं बड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन जब अपना ट्रम्प कार्ड खेल देते हैं अरे ये कैसे हो गया, कैसे कर सकते हैं लोग, तब आप अबे यार ये लोग ने नाम चेंज ही नहीं कर हमेशा एक चीज रहती है अगर इन्होंने एक बार ये पता चला ना मतलब इनके पास एक नहीं है और भी कई सारे, तो वो एक्स फैक्टर अगर आपके पास एक एडवांटेज है आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है कि आपके पास ना एक सबसे अच्छा एरिया कि आपको पता है ओपोनेंट क्या कर सकते हैं बिकॉज आपने इनको बार बार देखा है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी छुपा के रखनी पड़ेगी लेकिन सही समय पर उनको बाहर निकालना होगा। वेल स्ट्रैटेजीज की बात करें तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सीरीज लेआउट इटसेल्फ एंड वहां पे हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम्स ने क्या बैन किया है मैप एंड क्या यहां पे पिक रहेगा। एंड अगेन उसके अंदर अगर बात करें तो राइट ऑफ द बैट समिट यहां पे बैन होता हुआ फ्रॉम रेवेनेंट। नाउ मेजर पीस आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, इज दिस अ गुड चॉइस कमिंग इन फ्रॉम द बैंड्स इन दोनों टीम्स की तरफ से? आई मीन ये अगर आप देखेंगे तो हमें निर्वाणा का जो मैप है अगर मैं बात करूंगा वहां पे कहीं ना कहीं देखो मैं बताता हूं निर्वाणा का स्टैंड ऑफ पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रेड तो देखते हैं भाई एसएनडी है नथिंग आईक्यू गेम प्ले खेला है यहां पे, माइंड गेम खेला है और टाइमिंग रेंज और स्टैंड ऑफ में निर्वाणा निकाल सकते हैं। बाकी हसियांडा स्क्रिम्स में ये मैप यूज होता है, खेलने की जो टीम्स है वो रवा हो चुकी है इस मैप से कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज़ अगेन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं, इनको सारे के सारे मैप परखे हुए हैं, इनको सारे के सारे वहां पे मोमेंट्स पता है कि किस तरफ से कहां से आप हार्ड पॉइंट लेंगे, किस तरफ से आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे एंड वो फिर माइंड गेम पे बात चली जाती है। स्किल तो सबके पास है, स्किल तो सारी की सारी बेस्ट टीम्स वो तो बता ही रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ T1 मूवमेंट माइंड गेम्स हैं इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं कि जो माइंड गेम्स हैं वो किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए रणभूमि में उतरने से पहले ना मनभूमि में गेम खेला जाता है। बिल्कुल आई मीन वो चीज आपको देखने को मिलती है और ये आज यहाँ पे होता हुआ दिखाई भी दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से
हमारे पास यहाँ पे टीम्स है, टॉप हमारे पूरे देश की टीम्स आ रखी हैं यार। आज हमें ना बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्शन देखने को मिलने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, लेकिन आपका जो पॉइंट था यहाँ पर मेंटल प्रेशर कि बार बार हमने देखिए देखिए एक जोनर नहीं, अभी यूजुअली हमने रिसेंटली हम लोग काफी ज्यादा एक साथ बैठते हैं, ग्रीन रूम में हमने ये बात करी थी राइट। अगर आप स्टार्टिंग में ओपोनेंट को सप्रेस कर देते हैं, अगर आपने उनको ये बता दिया कि भाई ये आपका मैच है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, आपने ऑलरेडी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सूट भाज कर दिया, लेकिन हमने आपको स्ट्रॉन्ग सूट के ऊपर, आप ही के मैप के ऊपर अगर आपको शिकस्त दे दी, फिर आप डबल थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये चीज हर किसी के साथ होती है, इनफैक्ट मेरे साथ भी कई बार आई आल्सो ट्राइड, इनफैक्ट आई आल्सो कॉन्टैक्टेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कि आपके दिमाग में क्या होता है। फिर एक ही चीज होती है, इनफैक्ट सभी ये बोलते हैं कि भाई जीरो से स्टार्ट, दोबारा से सोचो। निर्वाणा ने आरएनटी का एनालिटर बैन किया है बोले, आपके दिमाग में एक चीज रहेगी भाई इसने ये चीज करा थी, अगर दोबारा आरएनटी ने स्पैरो वो जो एक आपका एरिया बन जाता है ना, अगर आप बार-बार कदम रखोगे गिरोगे। सिंपल सी चीज है, आपको हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग सूट बेस्ट रखना पड़ेगा। देखो फिनिक्स तो पहले भी बोल चुके हैं, अच्छा प्लेयर बनने के बनता है जी, जो अच्छा प्लेयर होता है वही अच्छा प्लेयर बनेगा। अब वो वाली जो बात है वो हो गई है साइड, बिकॉज़ जो स्किल है वो सारी की सारी टीम्स के प्लेयर्स 8 टीमें पूरे इंडिया के अंदर से निकल के आई हैं, तो वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये हैं तो बेस्ट टू द बेस्ट, तो स्किल सबका ऑन पॉइंट रहेगा, लेकिन उसके साथ में ये जो माइंड वाली गेम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अंदर जैसा फिनिक्स ने भी बात करी, मोमेंटम, बेसिकली ये बात हुई कि मोमेंटम जिसने पिक कर लिया स्टार्टिंग के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो ओपोनेंट टीम है उनके ऊपर और ज्यादा थोड़ी सी दुविधा आ जाती है कि अब हम किस तरीके से फायर करें, किस तरीके से हम रिस्पॉन्स करें। लेकिन अगेन मसाला तो वहीं पे ही है हमारे लिए भी। आई मीन ई स्पोर्ट्स प्लेयर को ना इन मोमेंटम को भी तोड़ना आ रखा है। मैं बताना चाहूंगा उनके पास काउंटर होती है हर चीज की। सामने वाली टीम ने ये चला तो अच्छा हमसे तेजी है तो वो काउंटर करके दिखाते हैं एंड उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इधर नहीं दिखाएंगे अपनी सारी स्ट्रैटेजी तो और कहां दिखाने वाले, आई डोंट नो कहां पे दिखाएंगे। लेकिन हाँ ब्रैगिंग राइट्स बखूबी यहाँ पे मिलेंगे, साथ साथ उस मनी के 375K का जो मैं बता दूं कहां दिखाएंगे, यहाँ से निकल के जाएंगी जो दो टीमें वो वहां दिखाएंगी इंडिया क्या है, इंडिया का जो दम है वो वही दो टीम्स हैं जो आगे लेके जाने वाली है, आगे बढ़ा करेंगी। एंड उसके साथ अगेन जो यहाँ पे मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, वो प्रेशर सारी की सारी टीम जरूर फील कर रही हैं, बट वील फाइंड आउट कि 8 के अंदर से वो कौन सी दो टीम्स हैं। अगेन फैन फेवरेट भी रहेंगी यहाँ पे थोड़े बहुत, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि तू अंडरडॉग तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वो एक्स फैक्टर वाली जैसी टीम्स हो जाती हैं, वो एक्स फैक्टर वाली टीम से मेरे को ज्यादा उम्मीद रहेंगी। थप्पड़ मार के आगे लेके दैट्स द बेस्ट पॉइंट राइट। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बात ना वहीं घूम फिर के आ जाती है। देखिए हर एक प्लेयर जानता है, प्लेयर्स एक दूसरे को इंग्लिश पहले पे चालू हो गया मैच, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो प्लेयर्स। अच्छा बता ना तो कभी देखते हैं स्टार्ट हो जा हाँ बढ़िया। अरे जॉर्ड oversight over the top of this mid fountain area as they look to try to stretch over towards the left side of the mini map. Nirvana in a really solid spot to at least contest this for now. 13 seconds have been earned. Everything else now going neutral for a time, but as Zyro is able to open up a little bit of space on the point. It's on the point. You thought maybe Revenant could use that to push across, but Proton's in the same mix, able to find a couple of kills. And that's actually going to be Nirvana. Now back out of the hard point, but hold on a second here, Proper. Oh my! On the bottom side of your mini map. Yeah, they're trying to pressure out on the northern lane. You can see them coming out from control, but are they going to be aware of the spawn so far? It doesn't seem like it. It seems that G-Shots might be turning around, might be just a little bit too late. The trades might be coming through, but it's not influential enough. Luckily enough, if you are Revenant, rotation you're able to walk away with about 20 seconds or so off this hard point at the early stages. Nirvana, on the other hand of it, they are going to be spawning very far out. They have to combat all the way through a multitude of power positions on Revenant's current setup for 2. It just really looked like Nirvana could not quite read that the spawns had flipped until it was just a little bit too late. So the second hard point has opened up. Revenant currently positioning in towards the high ground, but there's a little bit of space here that Nirvana can work with. 3 members towards the low ground. A couple of kills coming through as Dope is trying to make a play over towards the side entry. Good for the first. Oh my, gets the second. No problems there. All of a sudden, maybe a chance to break. Once again, those powerful spawns come in. The proximity allows Revenant to reinforce, and they're still in the hard point while doing it. This is fantastic utility that's coming out from Revenant while they're just maintaining the high ground as well. They're reading where all these players are located at. Big 1v1 up top, just going to concede the space for now is G-Shots, not really wanting all that smoke. 20 seconds still left the battle here on P2, and take a look at Revenant on the minimap as well, Alan. They're also playing from the future. Mid-map coverage is all there. They're reading the spawns in the back. You could not ask for a better P1 to P2. Yeah, really solid stuff. You're really not giving away any time whatsoever, not just to their opponent, but even over towards the neutral game clock. So now you start to hit the rotation with only 4 seconds to play. And how about this little spawn trap? इस बार भी आरएनटी का पहला rotation आया है. Need to get a good swing of kills coming through. This is where things could get dangerous because specialists are starting to be earned here on top of score streaks.
for Revenant to start to use, but the rotation is contested. Nirvana gets around the back, a chance to maybe envelop the hard point, but Revenant, using their streaks, are able to find a couple of kills, and they're getting a really good read in the lay of the land here. Nirvana's still stuck in the back. Yeah, this is exactly the snowball we were talking about when we were previously playing to 150. Revenant is letting Nirvana have it all, just utilizing the streaks, knowing damn well that Nirvana was already in the backside of Lounge. Oh, nice. They're just letting them have it. All the nades need to be on point, and it's just simply not good enough. 2 for 2 trades is not going to get Nirvana in cleanly enough for Lounge. But here we go, 3 straight kills. Mila spawn mila. Agla rotation. Still have to fight off this next wave though. That's the problem. And Revenant find the next following 3 eliminations. अबे मोबाइल तो movement डाल दिया भाई वो Proton so damn bro. Still finding kills. Focus कैसे कर रहा है वो? Try to spam things out. It's not going to work out. The Purifiers in and everything gets set ablaze. G-Shots clears the opening, and with 8 seconds still to fight for, it looks like Revenant will get over the 100-point mark comfortably. Use streaks to try to rotate over towards the top left side of the map, and once again, it's just Nirvana not able to put anything together early. Yeah, it's just map coverage on top of map coverage, and by way of specialist, my name is Revenant. 105 V29. Okay, Nirvana has the control. 3 all the way to 4 going into the control building. Yeah, you have lurking players if you are Nirvana, and they're playing in these isolated corners. And just need to be able to walk away with some of these kills. Last player that might be able to make an argument for it was Syro, but they're going to be met with a swift demise. Nirvana have themselves these closer spawns down, and they're going to have the numbers for the hard point for the time being. I was going to say, and they've also got some specialists of their own, so maybe a chance to start to turn this game around. No more the snowball effect of being able to earn specialists and streaks first, so that means you just win. But Nirvana has a long way to go here, especially Revenant starting to get Goliaths now in the mix as one will be called in. And this fight looking good for Revenant from the front side of the hill, even a little bit of a pinch. Oh, nice, Ray. Purifier getting some work done for Lazara. Able to find 2 before eventually falling. But how do you deal with the Goliath? The simple answer here proper is that you don't. G-Shots walks on in, clears out the hard point with 12 seconds to fight for. It's going to be Revenant getting the scrap. Yeah, right. I mean, you pull out a flamethrower. Well, I got a whole pseudo armor by name of Goliath, and it's just the returning of the answer of what Revenant been able to piece together, especially through the early stages of this first set of hardpoints, right? When Nirvana finally started tapping in towards their resources, Revenant answered back in kind. Just about a 100-point buffer going in towards the second set, and again, Nirvana not exactly on the favorite side of the map yet. But they are in positions around the high ground, maybe to contest onto the hard point itself, try to keep this neutral. Chip away, try to find a way to fight back here. So Revenant looking comfortable. Zyro gets the double over the top. That's going to create some space and a little bit of a read here for Revenant as far as where exactly do Nirvana want to come from. And that information is transmitted absolutely perfectly. Smoke will elude some of the vision on the player to the hard point, but the problem here is there's not been a lot of kills over the top. And all while this is happening, G-Shots has been really putting together a great game so far. Held a lot of the hard point time. Eventually Nirvana gets the break, but it comes with only 20 seconds remaining. And it's interesting, right, when we're talking about Revenant, again, these 4-4 players pick up G-Shots here coming in towards this year. Really just been depressed चले गए भाई इनके players depressed चले गए pressure आ गया अभी इनके मुंह पे 165 to 47 less than 10 seconds to battle over here, and if you are Nirvana, नहीं ये तो मुझे पता था Nirvana was gonna lose this first match of this control tower. Throw some more numbers in here. One isolated gunfight is not going to be good enough. You're not winning these isolated ones, not single-handedly, to be able to win these out by numbers. I'll see how things unfold here. Nirvana need this quick break. At this point, it starts to become dire situations. First 2 kills for Revenant looking good. Up top, trying to get over his Alpha, but shut down once again by G-Shots, who turns and able to find a second with a little bit of help from Zyro. Protons, maybe a chance though to try to flip these spawns around, but the problem is Zyro's got his Purifier out and he's completely rinsing Nirvana in the spawns. So a clean hold here for Revenant. Still a little bit of confusion as far as where exactly are Nirvana hitting from, but the confusion is only a mild inconvenience. Everything looking solid for Revenant as they pick up pretty much every single angle. Just Purifiers walking every doorway, every window. And well, that will get Revenant comfortably over the 200-point club. It's all of a sudden Nirvana struggling to get 50 points. It is just the reprise of what we saw on P2 through the first set of hardpoints, just the zone control inside a launch, and that upper corridor is just so good for Revenant as they are utilizing every single specialist, all of their streaks to such a fine degree. I don't even have to fully read where the spawns were at. 2-year point. Now we take a look at the rotation from 2 all the way over towards 3. Revenant, yeah, they lost a few lives, at least for the scrap time. Nirvana are forced to fight for it, but hey, Revenant are already in. Yeah, and here's an idea. Lazar's able to steal the Goliath. But the Predator missile comes down and shuts it up immediately. No, it was a heck of an attempt from Lazar, denying at least one major tool for Revenant, but I don't know if it's going to be enough to do too much overall because Zyro, I believe, has also just called in one of his own. Yep, sure has, and he's going to go ahead and just absolutely lay down on the from RNT side. Damn, bro.
looking like a tickle machine at the moment when it comes to the Goliath. 225 to 63. Nirvana do have numbers, and they are chipping away a little bit at Zyro, but the problem is it's just not fast enough. The Goliath able to shut everything down from the side, eventually deleted, but the numbers good for Revenant as they cruise towards 250. Just 10 seconds are all that required. If you're Nirvana, you have to flood, but you still have to deal with players just zoning you away from the front. That'll do it. Man, comfortable game here for Revenant. 38 eliminations for Zyro. Unbelievable stuff, and G-Shock, I believe, was just right behind him. So when you talk about some major performers that you're looking for, how about, quote-unquote, the new guys on this squad from Revenant last year? A good showing for our team is currently the number 5 seed. Again, surprisingly so, I would say, for a lot of people. Yeah, I mean, show up when it matters the most if you are this Revenant squad, right? Because you date all the way back to regionals. It was mostly led by Abyss. He was the guy going AWOL with a 1.5 KD, but you bring in G-Shots, you bring in Zyro, and this entire squad just looks like they are on full-on cruise control. Abyss is just able to kick his feet up inside the hard point, soak up as much time as possible, because when you got players like G-Shots and Zyro that are just answering back with streaks and specialists of their own continuously, as much as Nirvana were trying to throw anything that they possibly could, it's just the answer back was always that much better coming out from Revenant. It's tough, man, you know, especially with kind of the trends to score streaks and specialists that have kind of found its way towards the ban list or normally will get kind of vetoed out by either of our two teams. The thing is, you know, when you really sit and think about it, last year to 150 points, really whoever got specialists and score streaks first, 9 times out of 10, we're going to win the map. That is not necessarily a guarantee. Now that we go to 250, फेड हो गया 3-3 गोलाइट आ गए 4-5 प्लेड आ गए रास्ते में रोटेशन कट गई death machines do not deal as much damage SND निकालेगी Nirvana. It's still going to cost a lot. I feel like SND निकालेगी. And I think for Nirvana, that first Goliath they had to fight up against was really kind of the big stone wall in front of their comeback potential, because they were using purifiers and death machines to try to chew it down, and it just wasn't falling whatsoever. G-Shots absolutely immaculately handled the back. It's just absurd when you're thinking about it, right? Because it's not always just the Goliath that you have to deal with. You're also having a multitude of players just nading their way in forward to help out players like Zyro, as you saw just putting up a damn near 40 bomb there in that opening hardpoint of takeoff. You also have players that are just working around the Goliath as well, just shooting you in the side while you're just trying to tunnel vision onto the Goliath, and you just never went down for free. Not easily, anyway. It's tough, man. It's tough to delete it. That much is for sure. But map number 1 comfortably goes the way of Revenant. And I know that there were a lot of people who were very excited about at least the top 2 teams coming into this. And this is where we can no longer... अरे हिंदी में बहुत डीले है भाई 1 मिनट का लगभग डीले है They're looking like the clear-cut favorite in the अभी तक हिंदी में मैच चल ही रहा है pretty darn massive. But Team Vitality have made a couple of moves of their own from last year to this year. Look, एक समूह बनाते हैं, अच्छा लेकिन हिंदी वाले का ना देखो थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रीम लग रहा है अर्नमेंट का टंटन टोला जोना नचा बहन नर्वाना इंडिया के माइंड्स के अंदर घुस गए थे स्ट्रीम चल रही है डूबी सर स्ट्रीम चल रही है घुस गए थे क्या हाल है वो मेरे को नहीं पता था ईदू का स्ट्रीम चल रहा है हाँ वो मैं अभी इसलिए जल्दी बता दिया इससे पहले तुमने कुछ नहीं सुना मैंने कुछ नहीं बोला मेरे सुन के गया भाई ये मैं थोड़ी ना वही यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते थे मेरे में पाव भाजी लेने गया चेंज करना चाहिए था नर्वाना इंडिया को अभी कहाँ गए इसमें वो नहीं आया अभी चालू हो गया इंग्लिश में चालू हो गया हाँ इंग्लिश में चालू हो गया अभी इलू तेरा वैसे बहुत डिले पे है बाय द वे इंग्लिश भी मेरा 10 सेकंड्स रहेगा तेरा जब तू बोल रहा था ना कि तब तक हमारा मैच खत्म हो गया था 2x कर लेना प्लेबैक स्पीड को एक बार अरे नहीं निर्वाणा निकाल नहीं पहला राउंड हो गया पहला राउंड भी हो गया हम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हम एनएस अरे डूबी भाई एनएस भाई क्या यार एनएसएनयू नहीं एनवी नहीं तो एनिग्मा नहीं हाँ सक्षम है ना अपना bringing me all the way back to lock. I feel right at home. But legit कौन सी टीम को कर रहे हैं मेरे को बता दो देखो एक टीम तो पक्का जीती जाएगी गॉडल तो क्वेश्चन ही नहीं है सेकंड स्पॉट वाइटैलिटी या एनिग्मा कोई एक भाई अबे पहला वाइटैलिटी आ गया अबे एक बात बता कितने स्लॉट थे स्टेज 5 के दो ओह shit man getting this plant off. Tough competition. Like the look of it, backs away. एक स्पॉट तो पक्का है वो तो डाउट ही नहीं है और बेरेम का है अभी पाव भाजी लेने
है सही में? It's all mostly coming from the front again. नहीं It's पता all नहीं just on किधर the है। back of Lesnar, just trying to get themselves back inside of view. It's just way too किलो की तो slow. वैसे में बहुत Lesnar's टाइम able to बाद zone सुन लो। away players from the front of the AS&D. ये You're probably not going to get here ऐसे ही reliably, होता है। especially with Oil just holding outside. बड़े लोग हो गए भाई तो And वो। that's just going to be the round. Nice बड़े answer back लोग in from हाँ Revenant. हाँ? Small adjustment, बहुत right? Hey, सही they went in बड़े the flank, लोग। just put oil या over there. बेसमेंट में जाओ, Then पहला not जो that स्टेयरकेस Nirvana देखे has ऊपर anything to चढ़ do with जाओ water, और but टॉप पे oil लेफ्ट and साइड। water mix, not very well. भाई कितनी गंदी क्वालिटी है No भाई idea where I इसकी went with स्ट्रीम that. की। Why did I go there? The answer is it's 4:30 in the morning. अबे इनकी स्ट्रीम की गंदी क्वालिटी है बे। हाँ वही इनकी। अभी तक कितने मैचेस हो गए? अभी तो फर्स्ट मैच पूरा सेकंड चालू चल रहा है। 1-1 स्कोर है। तो बहुत डिले चल रहा है ना इसके सारी हाँ चीजों 1 घंटे डिलेड है मैचेस। वाह बेटे वाह। Once again, Nirvana trying to hit around the backside. अरे प्रोटॉन्स भाई प्रोटॉन्स भाई की स्नाइपिंग नहीं दिख रही मुझे। आई एम सैड। एनवी का मैच चल रहा है अभी। वही एनवी आरएनटी। आरएनटी कौन जीत रहा है? आरएनटी Dope looking to follow up, isn't able to get वन चल रहे और आगे that's all occurred. G-Shot आरएनटी एक मैच जीत गई, अब सेकंड चालू है, उसमें 1-1 स्कोर है। just need to find one. It's Dope up top. 2-1 हो गया। पहले मैच का स्कोर क्या था? 150-70 कुछ। सॉरी 250-70 250-70 समथिंग। 250 से अबे इलू तेरा एनवी में तो खेल था। अच्छा वो रजिस्ट्रेशन का पंगा। थोड़ा भी स्ट्रीम में मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाद में बताऊंगा। अरे भाई प्रोटॉन भाई की स्नाइपिंग नहीं दिख रही, बस यही दर्द है बस। स्नाइपर तो बॉन करेगा। अरे नहीं प्रोटॉन्स भाई ने क्या आहा आउट स्नाइप कर दिया था पूरी दुनिया को उन्होंने। भाई निर्वाणा गंदा होल्ड कर ली। Maybe an opportunity here as Dope and Protons. अरे SND they're actually able to hold this, and now all of a sudden Revenant's a चलो little bit 2-all हो गया stuck. at least। Backside garage, you have a contestant out of Alpha. 1v3 He's है। gonna contest the exit, and Alpha's able to find the opener pistol. निकाल for सकता है Zyro, भाई। nicely found. निकाल देगा लेकिन निर्वाणा SND एक है जहाँ पे निर्वाणा निकाल। एक मिल गया ना इसको, तो ये निकाल लेगा राउंड। मिलेगा कि नहीं डिपेंड करता। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक वो पीक ही नहीं कर रहे। Slightly more doable, but are you going to be able to fish out नहीं the दे information where these three players वो are सही lying on the खेल belly रहे। at? It's all about timing here. I mean, there's plenty of clock to play with. कहाँ मिल जाएगा? नहीं इसका भी नहीं मिलेगा, टाइमिंग ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। That are on top of the site. They're holding तो पीछे से पड़ गई। the first one gets collected, but no. Protons shuts things down. वो एक बंदा है जो boy did it get a little bit too close for comfort. I love that defense coming off from Nirvana. Again, Important gunfights. there, maybe thinking that it's going to be another AX. Gunfights तो सब lose करते हैं उसमें क्या। अबे क्या फास्ट बोल रहे हैं इंग्लिश भाई, पचर inside a Lambo that kept them अरे trapped. तू बस वो नाइस, अरे तू बस ये बोल, ये सुन नाइस ओपी जॉर्ड बस तेरे लिए। So round number 5 coming through. Focus still towards ओ भाई खा गया, ओ भाई डोप खा गया, दोनों को खा गया। Backside halls, but Oil's there once again. Uses the adjustment, man, but it doesn't make a difference when you line up for Dope. He gets the double, reads the third around the corner, but the nade over the top will keep things going for the offense as they have a chance to plant. पर राउंड थ्रो हो गया भाई शायद से मेरे से। बॉन भाई एक किल निकाल लो, दिखा दो। lurk their way inside the corner. मिलो भाई शॉट। भाई तो कर रहा है बॉन। अरे बॉन भाई, अरे बॉन भाई, अरे बॉन भाई। 3 बार चोक किया भाई। Not going to work out. अरे निकाल लेंगे दोनों, प्रोटॉन्स निकाल लेंगे। Force Bones to have to rotate over towards A. SMG Bones. And Protons, who's just kind of hanging with them. I like this call here. 50 seconds on the प्रोटॉन्स भाई clock. तो है। Just kind of wait, yeah, let him make the first move, and that's going to work out बराबर खेल wonderfully. लिए So दोनों, good लॉन्ग stuff there रेंज on गन Nirvana है, to finish लॉन्ग off the रेंज फाइट defense. लिया। 3-2 to their देख advantage. जीत जाएंगे भाई एसएनडी Now we get एनवी into आराम से। Revenant's final tagging round. Until कोई आरएनडी में पागल हो जाए। आरएनटी में वो BO3 है, जायरो स्नाइप क्यों नहीं कर रहे? कर रहा है। अगर जायरो स्नाइप करेगा ठीक से तो कुछ होगा, देख नहीं तो एनिमी जीतेगी 100%। अरे वो अटैकिंग साइड में नहीं मिलता इतना पिक।
ओ भाई स्नाइपर का able to find another हो गया opener. चलो Mid off screen, G shots over towards the आरटी site. दिखा देगी वो Takes down one more, so now all of a sudden Nirvana's kind of stuck चालू here. करते खत्म रहा हूँ Maybe it took a little bit here for, I would say, Revenant to make the full call to rotate back and go to what was working for them in the last couple of rounds. But here in round 6, clean as you'd like, 4v2 प्रोटॉन्स भाई निकाल दो 1v4 इजी आपका the last one left will be Protons. He's been good so far in the surge, प्रोटॉन्स but भाई this would be #1 miraculous to say the least. Makes his move कर दिया forward. 1v4 कर दिया Different little 2-2 split here for the post plan, and that will keep Protons completely at bay backside fences. No chance for him to slide on in, and we get to a 3-3 count. And that right there is almost shades of what we got to see specifically from Revenant when they were just trying to snowball from 2 into 3 on that takeoff hard. अबे Just नहीं overwhelm them with numbers, निर्वाणा get in their कंपटीशन दे face, रही है just make विदाउट sure गुड that they are not comfortable with any sort of setup, make Cypher a non-benefactor, especially with that boomstick. As we end up switching sides here, will be quite interesting to see how we are attacking. It's very difficult if we to are do competition on that thing. Playing this rather passive, a lot of mid-map coverage, but their bomb is isolated over by A. And I mean, Revenant, I mean, they just have to post up here. They ओ भाई बॉन्ड भाई तो आज Well, so far these little आग shoulder लगी spoils actually बॉन्ड finding भाई a lot of के information in the form of क्या no मार information. रहे हैं Nobody's आज here. तो बॉन्ड So भाई he's going to start to make a position to move forward, but careful as you go through archway. There is an offensive contestant waiting. That's the bomb carrier. भाई अल्फा दिख नहीं रहा है But first blood by way of sniper rifle will give Nirvana the numbers, and I will say, Andy, this is patient to say the least. Yeah, so much clock to play with. I love this. Just try to play against what Revenant finds success with, and that's their aggression. Look, just slowly encroaching up in upper halls. But again, the bomb carrier being isolated here from Lesnar जरा मरेगा शायद से अबे यार ये आगे क्वालिटी इतनी खराब क्यों है आगे जाते ही लेजरा गया Lesra is going to need help to get on this entry. He should know that there's no way he can move over towards A freely. But the offense is still 3-man stacked in the middle of the courtyard. We're not finding really anything through halls. Finally, Dope makes a move. That'll work out for another kill. And now you all of a sudden see Nirvana starting to stack. They want to go. Boyle, can he respond to this? Gets the first, looking for the second. To the hip fire he goes, but Alpha shuts it down, and the door has opened towards A. 35 seconds remaining. This is where the execute needs to be coming through. Take a look at the defensive players on the bottom side of the map. I mean, they're still lurking over by the BS&D. ये भी निर्वाणा का राउंड है निकालो पीछे साइड में और साइड में will be going down over by A. नहीं This bone उनका ही stacked up बंदा together, looking to flip out the map. इतना बड़ा रोटेशन From the offensive side. And Nirvana's going to get a lot ओ of space भाई ये here, तो not बहुत just बड़ा through रोटेशन the मार दिया site, but even more वो तो ठीक importantly, है दोनों the बंदे एक ability साइड to से क्यों utilize जा रहे हैं भाई U-Haul क्या कर वो रहे हैं पड़ा ओ भाई as अब a इसने key दिया position भाई for this post plan. So here comes Abyss and Bones. First shot perfectly centered from Abyss. Still a lot of work to be done. Only 20 seconds to do it. Long range. He sees one. Back to भाई the क्या smoke. मारा Top bomb! Biff peels Proton's head off. Now a chance अबे to अबे move. राउंड निकल गया तो 2v2. भाई गलत Alpha gets the opener. Traded अब by उसका Bones. प्लान नहीं है To उसका the प्लान 1v1 नहीं we है go. Not a lot of time on the clock. 10 seconds to play with. You अरे have to prone find करके out दे where पैर has दिख Dope गया gone to. पैर Bones will पैर have दिख time to गया go भाई searching. वरना हो जाता He'll try to डिफ्यूज stick for the defuse, and ओ just as he भाई does, नेक्स्ट ड्राइव है Dope गारंटी able to clutch things up for Nirvana. भाई क्या मारा भाई अबिस Absolute virtue. I mean, Nirvana milked every last second on that clock. चमका Just दिया भाई trying to अबिस ने execute तो over by A, trying to get coverage in the middle of the map. They got that first blood, and that kept Revenant rather honest. That retake, I truly thought that Abyss was about to make the plays of the gods. Have to answer back here with a strong defense, try to even it up for a piece. Trying to go for the read here. Bones making sure that there's no sort of antics happening over by B, but I mean, same old. Look at Nirvana again through the offense. They have a lot of coverage in the middle of the map. Bomb just lurking in the back of Lambo. Oh, man. And once again, Proper, it's another successful first blood through mid. Very puzzling to see this come through, especially, again, we're thinking like Black Ops 4 days when we were casting this game full time. You don't often see first bloods come through mid halls like this. But Abyss is able to come back through, respond. That deals with Lesnar, who was trying to get a bit greedy over towards office, if we're being candid. भाई क्या अबिस क्या स्नाइप कर रहा है Trying to भाई get over towards B. Bones through the side hallway. Able to help out, try to contest some of this Revenant defense to maybe play a little further forward. And Dahl's greedy again to try to come through this. Abyss is trying to find a way to help out. Yeah, but the trades work out nicely, honestly. भाई ऑयल Nirvana not really बैकस्टैप caught कर for दिया this. Now we go भाई towards 6 भाई Spiral, केएसपी and कितनी Oil's on the गंदी चल flank. रही है Should be able to clean up Dope, no problem, and the aggression will work out as we go back tied to 4. Tempered aggression this time around, specifically from Revenant. It is वो not स्विच ब्लेड क्यों नहीं यूज कर रहा everybody, as what we've seen in previous rounds, whether it's post-plan, केएसपी मेटा नहीं है रे rounds right on, because they अरे did वो that उनका first अलग one आए again पर through the middle of होता the होगा map, ना I and think then so they just ended up sacking on that BS&D hall side and just try to लोग retake it बोल with रहे their थे numbers, try to get शैडो face नर्फ again मिला once है they knew where the केएसपी को अरे शैडो नर्फ मिला स्पोर्ट वर्जन में नहीं मिला ना किलवा उनका अलग है अच्छा उनका अलग रहता है हाँ ये फिर स्पोर्ट वर्जन में खेल रहे ना वो The A site stuns to follow. ओह
and no connection. So Oil will once again देखना नहीं back on गॉर्डन में that कोई horse, स्पीच पे ride चलाएगा that pony up towards front side arch. This is so much control. It really is, and it's. विटालिटी में भाई आर्गन क्या चलाएगा मार रहा है भाई बॉन क्वालिटी इंक्रीज करा रहे उनका ही लो है वीडियो क्वालिटी अरे 1440p पे भी दिख Meanwhile, रहा है though, कोई मतलब opposite नहीं side towards क्वालिटी the इंक्रीज waterways of B, Cypher's able to find first blood by way of the sniper rifle. Look what that done to the defense. हिंदी का क्वालिटी Rotating over अच्छा है heavy-handed towards B. ओ भाई बॉन भाई तो आज पागल हो गए हिंदी का क्वालिटी अच्छा है अरे पर हिंदी का क्वालिटी अच्छा है पर तो होते होते 2 दिन लग जाएंगे अरे हिंदी का क्वालिटी आ रहा है नॉर्डविन से He knows that he's the only defender towards A. He has to hold here just in case Guys, there is an बताओ तुम लोग हिंदी देखना है अबे ट्रॉफी से मर गए बॉन तेलुगु में देखना भाई भैया try to envelop and contain तेलुगु में देखना मेरे को Revenant get the first 2 kills. One by way of trophy save. That should never happen, but it बॉन works भाई out for him. बेचारे ट्रॉफी से उड़ गए अरे एक काम कर इलू हाँ तू मराठी में बोलना शुरू कर देना पूरी कमेंट्री Would have to be from the front. Lesnar a little bit of trouble here over the top of the heady, but eventually मराठी gets वाले ओपी जॉर्ज नाइस shots. Bones trying to get the defuse out, but not going to work करने के out. लिए It's क्या कुछ भी Nirvana कर on देंगे map point. They are reading Revenant's भाई defense बॉन like पर क्या पिक निकाल रहा है भाई बॉन हर राउंड Where is it streaming? Attack किया ना मैंने बॉन और प्रोटॉन even that time around. It's the आप small पिक side of निकाल Facebook. रहे Lesnar हो doesn't have मजा the आ bomb, गया so if he does Proton get से 10 information kills. with अरे nades or यार arches, it's a क्या huge challenge, टूटन but भाई I love the discipline that's coming out from Nirvana continuously through the वापस offense. निकाल दिया पिक Agreed. अरे Yeah, भाई I बॉन really like पागल it. हो गया It's क्या आज patient and it's using टूर्नामेंट खेल रहा है भाई वो as मजा भाई दो खेलेगा दो Of course, we दो say that, तीन and look at this. भाई He's ज़्यादा built हो Usually गया we say they're throwing a curveball, but this one is just a straight heater Oh right my. over तीसरा towards भी A. मिल सकता Fastball in था play. Cypher for the double. Really और low. तीन मिल गए बैक ओ भाई 3 निकाल लिए Bomb बॉन planted. ने And for बॉन Revenant, भाई you've got बॉन this भाई mid कर U दो to play with, but तो this is वो still a मिल tough गया angle बॉन to भाई fight a full retake, एस especially बोलते as हैं they lose Abyss in the backside of the site. And now you know it's mostly मिड gonna रश be कर रहा है coming बहुत through अगर बाय चांस अगर ये G जीत shots गई stacked एनवी up तो together. उसके अंदर Nades भाई इनकॉग्निटो अबे है भाई 12 shots and this is a good luck, have fun moment. Smokes हेलो around. It's about to be a raid party in हाँ here. बोल It doesn't भी matter उठा because रहा the हूँ flank comes in. Lesnar just breaks it up. The bouncer is भाई in. क्या खेल रहे हैं भाई ये लोग एनवी और जीत बॉन गई क्या है मार रहा है Himself some भाई fight too. I love that, बॉन man. और I really प्रोटॉन do. क्या I प्यारे love पिक that निकाल play रहे from हैं भाई Lesnar. मजा Yeah, just get around the back side of it. If you want to play with smokes and nades, fine. But we just got numbers, so why not? We'll get around the back, no problem. So we go to 6-4. अल्फा अल्फा Revenant need to अरे find a अरे response वाह defensively here. भाई Gotta get ट्रेड this ऑफ हो back. गए And Cypher's been a major problem. Yeah, 9 kills, a lot of it coming by way of the चलो scope. Once भाई again, patience हो out of गया Alpha जीजी over the top of the couches. Nearly gets the double, but Protons will trade, and numbers will stay with the offensive. भाई अगर ये बॉन ने निकाल लिया ना Now किल working out in the ऑयल favor का of two नहीं players चला at South Hall lane. ये रश कर दे ये Cypher just hard triggered up here. Maybe trying to get a challenge. We'll give it up for now. Go back down bottom office. Try to help out their comrades as they're executing over by A. भाई प्रोटॉन्स पे राउंड है अगर इसने एक भी इधर निकाल लिया ना राउंड है इनका निकालेगा निकालेगा हो गया हो गया हो गया हो गया राउंड निकाल है गया इनका कल Help हो on गया this राउंड pinch है as Oil's going to try to join as they make their way over towards अब front उनको lobby, but दूसरी Protons जगह on से Wells in a रोटेशन really big मारना power पड़ेगा position. And you see exactly why जीत गए Revenant भाई jumped ahead. निर्वाणा Good read for the first. Gets ओए the ओए lead. सारे तो Shadow जीतता है जीतेगी shut रे down, and with एसएनडी that निकालेगी Revenant really निर्वाणा don't बहुत have the स्ट्रांग है ability to इसमें recontest this through lobby. And as the bomb is planted, this is another tough retake going into a ओक मिल 2v4. गया गया Looks like they're also कौन dropping down. You can see Bones trying to at least contest back through you. They go. Dope seems to have the read. The nades are coming through. You know exactly where they're बॉन located इसका at. पिक Catch निकाल them with a लेगा nade. Why बॉन not? 1v1 3v1. स्नाइपर Good लेट्स luck. गो Have fun, Zyro. ना भाई ना लेफ्ट नैरो Enough गन to निकाल go रहा up है 2-0. अरे Not यार most Cypher's likely, got a though. pretty solid read here. Yeah, they've definitely read. चलो मैं जीजी रहा हूँ चलो He's वन getting वन off the backside वन of वन patio. वन ओ वन भाई वन वन But it gets over to the side, able to shut down one. No quick scope there for Cypher. Problem is time. Most importantly, with भाई that Nirvana. Get to अरे बढ़िया बॉर्ड नहीं है ना वो 6-4. पक्का Clean हाँ हाँ stuff बहुत coming नहीं out from Nirvana. तो तेरे को क्या लगता है Really वायरस needed this ऐसा map, खेलेगा honestly. Yeah, I mean, after getting 70 point club, take off hard point, yeah, what a bounce back मैं that तो truly पता ही नहीं was. कौन क्या है And the game मैं was भूल actually गया भाई super बहुत sample पहले गेम analyzed खेलता था some मैं of the fine tunes that is बढ़िया Search खेले and भाई Destroy, बहुत बढ़िया specifically on खेले Hacienda, right? You got to see the over निकाल सकती है exemplification नहीं of तो भाई patience ये on their हिंदी वाले में क्या offense, no क्वालिटी आ less. रहा है भाई Just playing यार against how Revenant like to play. We saw it in the
take off Hardpoint. We saw it in their offensive rounds, and hell, they even continue on with that same ordeal going into their defense. Last time WC देखे मजा आ रहा था यार, पूरा एकदम सिर्फ वीकनेस में क्या था। Hey, एक करके मैं देखा last time with मजा। that boomstick in hand, and it was setting up their teammates continuously to either reflank or just to be able to get the easiest reads this side of the Mississippi Alley. इसका क्वालिटी देखते हैं हिंदी वाले का। Stop gaming. इंडिया वाले में तो मैच चल रहा होगा अभी। Udemy.
कदम चूमते हुए दिखाई देगी। बात करेंगे चालू है मैच। अरे बहुत अच्छा क्वालिटी है यहाँ पे डिफेंडिंग साइड में रेवेनेंट रहने वाली है ऑब्वियसली। वही बोला ना, हिंदी का बहुत अच्छा क्वालिटी है। अगर हम बात करें तो साइफर की, मैं तुमको स्पॉइलर दे दूंगा, तुम हिंदी देखो। इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं तो इंग्लिश और के ही देख रहा हूँ। बार-बार हर राउंड बाय राउंड क्वालिटी ठीक हुआ इंग्लिश का भी, इम्प्रूव करते गए जरूर है। ले अब भाई वो हिंदी जो का भी खराब aggressive दिख रहा है मेरे को तो अभी। स्टांस लिया था रेवेनेंट ने, एक 10 समय पर 2 सेट था, ट्रेड आया, लेकिन फिर 12 एक और प्लेयर प्रोटॉन्स वहां पर भाई, निकल गया। प्रोटॉन्स That was ने the bad 12 one. मार But दिए। still 3v4 है, डुएबल है और बॉम्ब प्लांट यहाँ पर करने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑयल का ये बैकस्टैब वर्क नहीं करता। भाई डोप भी तो 2 बार राउंड निकाला, 2 से 3 बार जो ऑयल स्टेप कहीं करके ना कहीं ऐसी चीज की स्टार्ट के साथ आएंगे और कहीं ना कहीं वो डोप ने वो वहां पे बहुत सही निकाला रे बी बॉम्ब पे। हाँ 2 बार मारा उसने उसने वही एक स्प्रे में कुछ भी प्लांट हो चुका है आपके पास। वही जो बोल रहा 2 बार उसने वही गलती की, आरएनडी वाले चौक की है ये रहा। लेकिन सुन ले तो उनको पता है उनका डिफेंस उसके बाद भी जा रहे हो। क्या ज़ायरो कर पाएंगे ये तो बहुत बड़ा सवाल है जरूर, लेकिन हाँ चालू हो गया, लेट्स गो। हाँ कंट्रोल के चालू हो गया। बहुत अच्छी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मजाक सेट है। सुकून तो है। हो जा लोड। कंट्रोल आरएनडी निकाल लेंगे भाई। फायरिंग है ना, प्रोटॉन्स भाई निकाल सकते हैं अकेले के दम पे। प्रोटॉन्स भाई का मैच और इसमें भी स्नाइप कर रहे हो। Looking solid for it. Cypher's trying to snipe to clear the middle of the map, trusting that his teammates can clear the outside. And I have to say, Proton's प्यारा खेल रहा है great in his प्रोटॉन 1v मैच। multiples. Gets a double, but it's just a अरे बॉन little भाई too late as the A zone has come and gone. Yeah, I mean, Nice Proton's one. taken isolated. Kol- Detroit might as well be able to continue on with दो some हवा दे दिया stride भाई। in the control. कार फटने वाला है। Here for Cypher, continuing on with their antics of what we saw on Hacienda. 24v24 with 2 minutes on the clock. Yeah, plenty of time to make this happen. Yeah, sure do. Thing about it is the defense is in a pretty solid ये spot दिखा backside मजा आ tires. जाएगा। The देख ले biggest इनको। problem though for the defense is you can टायर get वाला? very quickly, and you're starting to see that नहीं circle देखा। unfold on the minimap itself. But Protons, as mentioned, has been great in these individual moments, not able to get into active. भाई आरएनडी कसम से लोअर ब्रैकेट में भेज दिया, मान जाऊंगा मैंने। One more player मजाक करके बोल रहा हूँ। trying to work through. That's Lezra, able to get the opener. Proton's working back through container. Everyone's getting stunned as the first take is locked in. Has to be on the retake, and Lezra finally activated backside tires for a triple. That will give the defense some ground to work with. Yeah, wonderful. Be able to at least get back in control. Nope, Splitting across the map though. Here come at least the offensive retake. अल्फा निकाल लेगा। अरे यार but the trade will be in there surely. Now you just got to turn around and deal with these flanking members. Oh, Alpha. Oh, nearly gets the collide, but only finds one. Revenant, a chance to stop the clock, get back on towards B, make progress with 2 members on to the second tick of progress, and they've got a really solid read as far as where the defense is coming from. Set up. Bones benefits off the double, help from Zyro in the action, but once again, Lezra in the back, able to help out his teammates for a little bit of clearance, but not fully. Nikas gets the final 1v2. Now it's just down to can you hold off the final contestants through container? Sure, why not? They can't get there in time. Revenant take the opening. कंट्रोल में भाई जितना ओपनिंग फ्रैग निकालो ज्यादा बेटर है। That aggression that is शुरू में ही मारो भाई for them, but it's also just the idea of yes, we are getting control of the map, but be careful when you are stepping on that. आरएनडी बार-बार ट्रेलर कंट्रोल ले रही है यार, निर्वाणा को देना नहीं चाहिए। To start off here on the control. मॉडल और वर्टिलिटी वाले खेल रहे हैं, अभी नहीं होगा मैच, थोड़ी देर बाद होगा। In a victory. Look how much space is उनका मैच 3-4 बजे क्या their trailer. Dope has already got. अभी खत्म गए सारे। Problem about it is the base has got a purifier. अरे निर्वाणा बार-बार ट्रेलर कंट्रोल हुआ, ये भी तो आगे निर्वाणा। भाई जी शॉट्स कहाँ घूम रहा है भाई, इतना ओपन है वो। 3 के किल मिल रहा है उसको। क्या निकाला भाई। 4 किल मिल रहे जी शॉट्स को। Caught in a spawn trap, and Cypher is all the way into the backside of B, sure, but almost has to give up this position and come through the middle and help out their teammates. Now, Dope will find 2. Should open up at least an avenue you would hope to the offense and maybe try to get some ground. They're neutralizing okay. Thing about it is you have to be able to cleanly win the next set of fights. And as they focus towards B, it's Revenant's defense that's able to hold. Put a little bit of pressure through the middle of the map as well, but a little bit of a bounce back. Now the lives just down to a 3-count differential, favoring the defense. Still 22 seconds on the clock, and the biggest thing about this is you've got to get onto a zone. You got to get here, right now. Dope trying to get a little bit of work done. Able to get a little bit of assistance from his teammate Cypher, but just as soon as he's called upon, he's shut down.
Can't get out of the zone. Good shutdown here from Revenant defensively. Need to find one more. Little slide shell around the corner will work out. But still, Nirvana through the middle of the map. Able to get clearance in itself. Oh, works his way forward. A beautiful double. And the clock will stop with 12 seconds remaining. Alpha निकाल ले, Alpha निकाल ले. 2d5 निकाल लेता तो far away his teammates are from this play. Alpha needs to go continuously big yet again. भाई बराबर स्कोर हुआ है. Multiple won't be able to Easy at least find है. another. Comes at least Lesnar for the help, but it's just not going to simply be good enough. Numbers just way too overwhelming. They finally are able to take their virtues at least over towards A, but the problem still amounts that clock needs to be solved. Laser आ गया. Mid से back There's not a lot of mid-map control here from Nirvana. You have to win every single gunfight in 50-50 form. Take your ones, win your ones. Lesnar cut down in the middle of the map. First tick of progress, good on towards A. It's also an 8v6, by the way. The lives all of a sudden have turned in favor of Nirvana. There's an opportunity to steal this offense away by way of elimination. Second tick of progress, good. 5 seconds on the clock. Space here. A 6v6 now comes through. Now potentially a chance to contest. Revenant working in towards trailer, and they're able to get the clear. 6v5 the final. इलू तो देखा चौक किए नहीं तो ट्रेलर में घुस गया आरएनटी वाले. दो बंदे ट्रेलर क्रॉस फायर बना के बैठो. वो भी फुल कवर में भाई गारंटी घुस के मार दी. चौक किए निर्वाणा को. I really thought that Alpha's play going over towards that zone was the rally that they needed to be able to get themselves coverage to work their way back over towards the zone. But when desperation sets in, your fundamentals kind of go out the window. And as you were saying, middle of that coverage just wasn't there. You got to try to work a reverse sweep here in the control. As you see the aggression just already amounting inside a 10. Trades are going to be a bountiful. Be able to come out on top for the time being. What a lifeline that would have been in the face of a great purifier from Revenant. Nirvana nearly able to get to a 1-1 tie. Bones now operating his specialist through mid. Looking to cut anyone down over through front side. America, and oh boy. I mean, you see that, it's just like, all right, dude. What do you do? Combo of 3, now fourth, purifier. Operator का इस्तेमाल बहुत सही करेगा. He sees everything, and oh no, it's all gone wrong. The purifier still wins some shots. His way, Goliath third, but may not need it as it's a 23v10. The focus over towards B is good. Nobody can stop Bones. The only thing he's doing is shredding everyone in his way. G-Shot's feeling some inspiration off the purifier play. And as the Goliath gets called in, it's only a matter of time. ये तो bully हो गई. Bones में तो that was disgusting. Predator missiles, yeah. Final nail in the coffin by way of a Predator missile. Why not? I mean, Revenant, they just knew exactly what they needed to do coming into that final round on fire range control. And that was just, hey guys, what do you have in your back pockets? Oh, you got a purifier? Why don't you just go ahead on a little bit of a spree right there, get yourself a Predator missile, get yet another combo extension. And my heavens, I haven't seen dominance on a control round like that in quite some time. And although it may be 5 o'clock in the morning, I'm going to fall asleep at some point. I will have nightmares. I will have just disgusting nightmares of what I just saw. Man, dude, this Revenant team in Respawn is for real. I'll say that much. And the thing about it, too, is just like, here's the thing, like, if we're doing our job correctly, which we do try to do that every now and again. Honestly, like, Nirvana was this close to stealing away an attack in the face of another great purifier to open up that defense for Revenant. If you get those last couple of kills, you stay in the zone a little bit longer, all of a sudden, you see at least the 4th round, and maybe the specialists start to stack the trend towards your direction, but not quite the case there. You see the final stats, and yeah, top G-Shots, Bones, double positive, plus some. वो बोन्स ने तो वो जब अबे ये लोग ना ऑपरेटर बहुत सही से इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए रिस्पॉन्स जीत रहे हैं लोग. Good for Revenant, dude. They're so good. स्पॉन्टर पर नहीं है अपने निर्वाणा में कोई जा ही नहीं रहा कोई. What they might bring to the table, but then going to that takeoff hardpoint, we're like, all right, G-Shots, we see you. And they were also winning a lot of big isolated engagements on the Hacienda Search and Destroy. Obviously, easier said than done when it comes down to SND है क्या पे नहीं stand off HP DO5 है क्या? हाँ. This Revenant squad is just undeniable. Match point है RNT के बाद. अब ये आखिरी उम्मीद है निर्वाणा की. Already in towards front brown. And that's just not good news. And you can stand-off कैसा है stand-off का? All over the map. Stand-off अच्छा है. Them to win their 1v1s. मतलब decent है. Did they? The kill feed answers a very convincing no in the first 10 seconds plus some going the way of Revenant. Alpha बहुत अच्छा खेलता है stand-off ऐसे.
as well. Bones will be traded, but it's a consolation trade. In fact, you don't exactly have all of the map coverages. You're still spawning essentially all the way into the backside of the building. You're not going to necessarily have the coverage to speak of. You're going to be trying to play for the rotation all the way onto the bottom side. Past Alpha OBJ is dope. Has a lot of players in front of their eyes. And अबे OBJ clear ही नहीं हो रहा. Rotation bro, कहाँ है rotation is? देख रहा है Dope अकेला rotation ले रहा है भाई. टीममेट का support नहीं है. Ilu. अंदर से sandwich हो गई है. Still going to be tested. हाँ भैया अकेला बेचारा. Oh, shut down. So all of a sudden, hold on a second. आ गया top As we बंदा. get some numbers starting to stack up for Nirvana. They're clearing out the front. चला गया Can't support. quite set up a तो buffer से zone दिया on the support. second hill, but for the moment, the numbers are decent. Plus, they've got a little bit of the gas station control. Revenant trying to अबे change क्या time चल that. रहा है? जरा time बताओ तुम लोग का. Left is Bones, and as he drops, Hardpoint the time बताओ. status of spawns will favor that of Nirvana. 13:38. Now it's just down to can Revenant break from the front. Yeah, the zone is actually very, very good as you see what's going on inside of the hotel, even outside Cypher. It just has this angle on lock. भाई Dope, hello. Player number 3 in blue as well. Nirvana's setup here in P2 is a good one, but still Revenant relentlessly assaulting. Still ample time to battle here on 2. नहीं रे, वो cover नहीं मिल रहा है point में. बाहर से बंदे कैसे आ रहे point में? Revenant was coming from, and that allows an opportunity for still 30 seconds to fight for though. अभी तक तो खेल रहा है. Rotation from Dope और Alpha खेल रहे हैं. इसमें Protons का थोड़ा कमजोर हो गया. breakthrough warehouse. Protons को पता है आर्टिल लेके बैक अभी बैठना चाहिए. वही AD चाहिए उसको. Point क्यों खेल रहा है Protons? Bro why? They're down at the moment, but this is going to be guaranteed scrap time with some streaks to help you out on rotation as we go over to Granny. Rotation बहुत late. Not exactly the strongest और setup क्या हाल you're looking Balkan? for in the middle of the Stream map, quality and it ठीक seems कर that लो. Nirvana Stream are quality trying to बराबर है. exploit इनका that, खराब है. moving their way past statue through the middle of the map, trying to get this zone control in their favor. We'll find at least one, but trades will still favor that of Revenant. Yeah, absolutely will. बहुत ज़्यादा खराब है क्या? Number 1 in blue around the back. अरे वो इन्हीं का खराब हो रहा है भाई. That could influence these spawns pretty convincingly, but Zyro gets a read, able to deal with the majority of the threat now from the top side of the window. This is where things get really dicey because Zyro's going to have so much early information. And yeah, Revenant looking good on this hold. Bones able to collect a double from the front side of the hard point, make it a third before finally being shut down, and Revenant cruising through the first half of this hill. Spawns coming through from Nirvana on the backside of the gas station. You need some zone control coming through. And hey, 2 kills to start things off. That's a great opening. You're actually going to force some Revenant players to spawn out here for the hard point. But now comes the flood. You got to work your way in. Alpha's going to dip their toes into the resource department to at least give themselves a little bit more of an opening. And yeah, that break is quite crucial indeed. You do not want Revenant to start snowballing in yet another hard point. But it does cost 2 purifiers to do this. And as G-Soch continues to go on a rampage on the exits, which by the way, this isn't just exits. He can actually contest this with a while longer. Oh my goodness! Takes down one more. That makes life extremely difficult for Nirvana. देख रहे हो R&D वाले सारे ऑपरेटर बचा And you look over towards the top right of your UI. 5 specialists are ready for Revenant if they choose to need them, which, honestly speaking, they may, because the kills from Nirvana are looking good as they start to rotate across. Hold on a second. There's still a chance to break this off the initial time. Zyro's holding on inside the hard point for now. He gets taken down from behind, and Revenant don't have the numbers. They may need to call in a specialist here. And it's all coming through just an isolated engagement through that very small chokehold that is the doorway. Good luck, have fun. Oil is currently just locking things down, just triggered on up, just making sure that those shots are ringing on true. Gonna have to pause the game slightly so that way they can reload their RPD, yeah, but also reading players on towards the flank. And as you were saying, I mean, you might have to utilize some sort of specialist. You have to be able to use some sort of resource to break back into this hard point. Yeah, Bones able to pull out another purifier. It was G-shots on the initial just to kind of make sure things were trending back towards Revenant's direction. Now has his purifier. Wait, he gets shut down. So maybe there's a chance to really dominate here, but all of a sudden, the break looking good for Nirvana. It goes neutral the last 10 seconds, and that will lead to an opportunity for Nirvana to rotate back over to P1. Use Lesra's position maybe to try to lock in some early hotel control, but Oil has the call of his specialist out. He's going to control those bottom levels, and an opportunity for Revenant to open up this first hard point to their name. Pending they can win the gunfights, and honestly speaking, they don't. Oil also gets shut down. Hold on a second. That's a lot of specialists off the table, and Nirvana's actually the team in first. Yeah, Alpha actually made just a fantastic play. Yeah, they got the spawn inside of Delhi. They were kind of gifted with that little bit of a flanker too. They did come through, and they capitalized on top of it, but Revenant with numbers off their own respawn overwhelm what little of a setup Nirvana were once hoping for here on 1. Still 38 seconds off the battle over, and Revenant slowly getting closer to the 150-point mark. Yeah, some Hunter drones used here for Nirvana, trying to get back over to contest the back 30 seconds. Dope able to find one player, the second on the backside, dealt with by Nade, but Dope gets credited the assist.
One more to try to challenge that Zyro. That is too individualistic from Revenant. They're getting picked apart one by one here. Oh, hold on a second. The comeback on the way potentially. Nirvana up to 80 points. The 137 of Revenant. Only 13 seconds to fight for here on Old. We look over towards Proton's position, and you look at the minimap with this. Nirvana's in a great position to try to win out towards Warehouse, but the kill's not going to go their way. And as Revenant take the scrap 5 seconds, they've also got numbers on new. Yeah, all of Revenant just completely rectify the issue that did plague them in that first set of hard points, right? But it doesn't matter, does it? Because Nirvana, off their respawns, they find themselves the engagements. They're utilizing more resources. Zyro here with the Purifier inside of the hill, just waiting for the call where these Revenant players are located at. This is what you needed. Rotation का दिया still decent. Alpha's able to get back through, take out the Purifier, and now Lesra's here with help. This is looking solid for Nirvana at the moment, but you have to win this next set of engagements. This is a big 40 seconds, and Bones comes in with a double. That will open up an opportunity for Revenant to use their numbers to try to get in for the scrap time. Cypher with the Purifier, trying to do what he can to hold this hard point, and as the help from nades comes out, the numbers all of a sudden, the tables have turned. It's going to turn right back in toward Nirvana's way. 20 seconds of scrap time. Going to be conceded by Revenant as they're largely focused on rotation. Yeah, and also look at the rotation as well from Nirvana. That's actually going to be the call from Alpha again to utilize the Purifier here on Old to secure this scrap time, making sure that Revenant are feeling the pressure. Solely focus on the rotation going over towards Grandma's. And, well, yeah, he got G-shots up here with the Purifier themselves, but it gets answers back by Dope. A quick 3-piece of a trade comes through by way of team. Revenant are going to be able to at least secure their numbers going into new. Tight moment there from Dope, who also had the Purifier out. You thought maybe for a second with him winning that opener, there is a chance that he could do more. But look at this. The full envelopment once again. Trying to get the high ground control. They get up the ladders. Kills coming through the windows. Now it's just down to finding the final members that are in. Who's going to go first? Alpha the first one in. Dope there to follow up. It's just G-shots you have to be able to take down. But G-shots is not falling without a fight. Finally, the death machine comes out for Proton. Trying to lock down the first floor, and it works out flawlessly here proper. 30 seconds remaining on the hard point, and Nirvana right back in this game. Oh, you got a death machine down low. You got a Purifier up top. Lesnar take their virtues to the backyard through Delhi. They are grilling some ham, man. And that is just scary when you're looking from Revenant's perspective, because you are taking your virtues if you are Lesnar with that Purifier inside the hotel. This is a big moment. Especially as your teammates are getting down by Bakery. There's no more specials here. The only one up is possibly Bones. No one else has anything charged yet. Alpha क्या खेल रहे हैं? Play from Alpha down low. Lots of damage. Able to try to keep Revenant out of the new hard point, but it's not quite enough to do more than just find the first. So Revenant with numbers inside the hill. Feeling the pressure though, Nirvana's right on their heels. Just comes down to can they find the eliminations, and Oil will be able to shut some players down by way of his own Purifier, and that will stabilize, at least for now, if you're Revenant. Yeah, you can see that Revenant just holding on to Bones' specialist. Abyss is able to get yet another one as well. They are in firm control of this P4 for the time being, and they're also walking away with these gunfights, the flank as well. For the time being, was Bones going to be able to shut at least one player down. But you know, mostly of this hit is going to be coming through the front to battle over the scrap time. Yeah, great stabilization here from Revenant. From Nirvana. Oh, the Predator missile also being called in. We'll find a handful. That's not great news here. 15 seconds of scrap time, likely going to have to be conceded. 40 points बचे. As Nirvana also needs to start to work across the map a little bit. See if they can find a way to get some exits off of this bakery push through. And as Revenant gets around over towards Warehouse, there's a chance that they can still threaten over towards Hotel, but Dope right back in the mix as he finds his 30th elimination. Can lock down the back, good help coming through. And even though it's 227 to 167, numbers are good here for Nirvana as we get back over to P1, at least initially. I just caster cursed it. I was about to say, but you got to play perfectly off the returning gunfights, which Revenant have looked undeniable with, especially through that second set of hard points. So close spawns coming through from Nirvana. They have players inside of the hotel itself, but still the nades, the gunfights, all in the favor. Zyro will show up in the kill feed at least 3 times. There for the last. They'll be in possession of the hard point. And there is no vacancy here from Hotel with Bones playing receptionist with the Purifier. Not a greeting that anyone would like to see. बढ़िया खेली बे, बहुत बढ़िया खेली. बहुत अच्छा fight from Nirvana. It's Revenant at the end that's able to take what is largely a comfortable final 2 hills to get over the hurdle of a very tough opponent in this opening round of Swiss matchups. Getting them the win and moving on to the 1-0 side of the bracket. With only one more win control में हाथ दिए, बाकी बढ़िया खेले. बाकी सब बढ़िया खेले. Bracket Nirvana set
now with only one life फर्स्ट left, they respawn have to में win their next पैनिक 2 में in a row. खेले And पता after है have that immediate शकल turnaround, देख के they know सबका they're लग gonna रहा be going था up against another team that is हाँ मतलब वो तो रहेगा ही नहीं, वो 5 से मिस पे बैठे हैं obvious, वो थोड़ा तो रहेगा ही डर। That comeback was about to be a big one as they were able to piece together at least a lot of good time there on 3 going in towards 4 for at least that second set of hard points. But again, this is what we have come to know and expect from this Revenant roster from that takeoff hard point map number 1. When this roster ends up having Enigma versus Rebirth. Rebirth का मैच they know मजा आएगा देखने। exactly how Rebirth to में एक utilize से them. एक अच्छे My बंदे भाई हैं। एनिग्मा वर्सेस रिबर्थ बहुत बढ़िया कंपटीशन रहने वाला है, बता रहा हूँ। My heavens, it always भाई felt like रिबर्थ में बंदे जो है ना last जॉर्ड है players जॉर्ड alive. मजाक And that's करके exactly बोलता who I want last alive on the hard point specifically as he just pulls out the purifier and seemingly was always walking with about 5+. Yeah, man, it really was a Border heck match of an का effort. वो भाई क्या चल रहा But है? yeah, I think you hit the nail on the head when it comes down to who was the difference maker in this one. But I mean, Zyro pulls 2 minutes and 17 4K seconds quality of the stream, hard point time. Still so goes much positive. fun. Do not over neglect on G-Shots. Nearly 2.5 minutes inside the hard point, and also goes 27 and 25. Great बंदे stuff क्या from him. कमेंट डालते हैं? All in all, a solid team effort. But I think for this Revenant squad, Yes, mod. maybe some Tell them to confidence was increase rattled, bitrate. for the fan base that's out there, considering that they didn't really have a great सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे। when it comes down to teams that you expect them to beat, especially after kind of boasting 4 returning members. But I will say for Zyro and G-Shots, really solid stuff from them, pretty much all the way throughout. just scoreboard Zyro पे and एक G. मास्टर लेकिन नहीं खेला ना आरएनटी में। अल्फा खेला है, अल्फा तो बराबर खेला है 1 मिनट 17 सेकंड ओबीजे, ओबीजे कम था निर्वाणा का। ये लोग का देख दो, ओ भाई 2 मिनट ओबीजे, 1 मिनट ओबीजे, 2 मिनट ओबीजे, 3 बंदे ओबीजे, 37 किल्स। बोन्स तो क्या ही मार रहा है भाई, समझ ही नहीं रहा। निर्वाणा का ओबीजे कब है? 2 बंदे का है बस, 1 मिनट अप। ये लोग में 2 मिनट आगे। ओ भाई अरे ये प्रोटॉन्स जो है ना, प्रोटॉन्स को बाहर खेलना चाहिए। प्रोटॉन्स ओबीजे क्यों जा रहा है? तभी जाके अपने ओबीजे प्लेयर्स अंदर नहीं पहुंच रहे, ऐसा सीन है इनका। नहीं तो निकाल देते हैं भी ये लोग, बहुत गलत किया। किधर गया बे? Some shaky things in that Hacienda Search and Destroy that need to be talked about before they get to their second round matchup. But with that said, we've staggered the first round of this Swiss bracket. Coming up next, we've got Enigma taking on Fenrir. I'm really pumped to see what Fenrir has to offer here against a pretty solid attempt for what looks to be a pretty team that you would think would be good for qualification out of the Indian region. We'll find out when we come back. Do not go anywhere. विल बी राइट बैक। चलो अब ये घंटा भर लगाएंगे, अपन हिंदी में क्या चल रहा है देखेंगे तब तक। अभी ये क्या है? डिस्ट्रॉय में वो काफी अच्छा था, वो बोलूंगा लाजवाब था, बिकॉज 2 पॉइंट की लीड थी इनके पास, यहाँ पे जीते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर बात करें हम कंट्रोल मोड की, वहीं से जो मैं बोलूंगा एक कहानी जो है ना वो बदलती हुई दिखाई दे गई थी। वहाँ पे जिस तरीके से रेवेनेंट ने यहाँ पे जीत निकाली अपने नाम पे, और ये वाला हार्ड पॉइंट जो है यहाँ पे आके जिस तरीके से यहाँ पे अपना दबदबा। कहाँ लाइव चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है? कंट्री की, लेकिन अब वो जाएंगी वहाँ पे लो ब्रैकेट के अंदर, उनके पास में फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड उसी के साथ अगर रेवेनेंट की बात करें तो वेल उन्होंने तो पहली गेम के अंदर मसालेदार परफॉर्मेंस निकाल के दी है एंड काफी एंटरटेनिंग गेम जरूर रहा, बिकॉज जैसा अभी मेजर बीस ने भी बोला दैट वो जो सर्च एंड डिस्ट्रॉय के अंदर निर्वाणा का जो गेम प्ले था दैट वाज आल्सो वेरी क्वालिटी की मां बहन कर दी भाई ये लोग। ओपोनेंट को तैयार रहना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सर्च एंड डिस्ट्रॉय के लिए, बिकॉज निर्वाणा उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है। प्लस एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, पहले का हार्ड पॉइंट और दूसरे का हार्ड पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल, बिकॉज 50 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहा था। गुजर भाई क्या चाल, बड़े दिन बाद हमने पहले हार्ड पॉइंट में देखा कि निर्वाणा जो है ना थोड़ा सा ऐसा फील कर रही है यार ठीक है, डगमगा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पकड़ी है, उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ थी। मैं तभी बोल रहा हूँ निर्वाणा को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। डेफिनेटली नॉट, बिकॉज़ अगेन वो अपने ओपोनेंट्स के साथ एंड उनके अगेंस्ट खेलना जानते हैं, सीखते हैं डायनामिकली। जैसे जैसे राउंड चल रहा था वैसे वैसे अगेन दिस वाज डू एंड डाई मोमेंट उनके लिए भी, बिकॉज उनको ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगेन वो काफी ही ज्यादा क्लोज मैच जरूर लेके आई निर्वाणा इंडिया, बट इन द एंड द BO5 सीरीज विल गो इन फेवर ऑफ रेवेनेंट esports। ये पहला गेम अगेन गेम्स तो काफी हैं अभी।
गेम तो काफी सारी बची हैं अभी, तो हमें पता चलता रहेगा कि किस तरीके से। ऑल्सो एक और पॉइंट मैं लेके आना चाहूँगा, दी अदर टीम जो अभी नहीं खेले हैं और जो दूसरा मैच नीचे खेल रहे हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली उनका भी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली जो मैच चल रहा है तो उसकी भी क्या वहां पे स्टोरी लाइन रही। सो लेट्स मूव ऑन टू ऑफ कोर्स दी स्टोरी लाइन इटसेल्फ जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड यहाँ पे सीरीज लेआउट की अगर हम बात करें तो वेल द गेम इज इन फेवर ऑफ रेवेनेंट esports। अब रेवेनेंट के बारे में ना 3 पॉइंट मैं सबसे पहली बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, उन्होंने जो टेक ऑफ स्टार्टिंग में हार्ड पॉइंट में एक चीज देखी थी कि दे आर नॉट गुड, निर्वाणा इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी डुअल्स लेने में। बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक्सप्लॉइट करा कि भाई 3 प्लेयर भेज दे कि मारो, बाकी 2 प्लेयर है संभालने के लिए, उसकी वजह से काफी ज्यादा स्कोर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट द बेस्ट पार्ट इज, जैसा कि आपने भी मेंशन करा, इनफैक्ट मेजर ने भी मेंशन करा, निर्वाणा ना हर एक गलती से सीख रही थी राउंड बाय राउंड, और उन्होंने वो चीज सर्च एंड डिस्ट्रॉय में करी। पहला राउंड यहाँ पर रेवेनेंट की तरफ से आ रहा, अज्यूमिंग की टेस्ट कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज़ निर्वाणा हर बार कुछ ना कुछ अलग कर रही थी। और जिस तरीके से हमने देखा था यहाँ पर साइफर की तरफ से वो करारे शॉट, आई लव दोस। लेकिन अब एक और चीज है, रेवेनेंट के कुछ वीकनेस देखने को मिली है, निर्वाणा ने ढूंढ के निकाली है। बाकी टीम को हेल्प हो सकती है कि अब इनको कैसे टेक डाउन कर सकते हैं। बिकॉज़ देखो, वो अगर वीकनेस की बात करो, अगेन यू आर द एनालिस्ट, यू आर द कास्टर, तो आप मेरे को करेक्ट करना। बट जो मैंने देखा वो होल्ड करके बैठते हैं। अगर वो होल्ड किसी तरीके से पहले ना मिल पाए ओपोनेंट, वो छीन ले रेवेनेंट से, तो ऑटोमेटिकली गेम वहां पे तख्ते पूरे के पूरे पड़ जा सकते हैं। दे हैव टू बी डायनामिक, दैट्स इट। अगर वो चीज होती है देन यू कैन इजीली टेक डाउन देम। सो ट्रू, बिल्कुल ये चीज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से साइफर ने आज स्नाइपिंग करी ना, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया थी। और अगर हम बात करें स्नाइपर की बात करें और हम यहाँ पे मेंशन ना करें एबिस का, तो वो काफी ज्यादा गलत हो जाएगा। बिकॉज़ एबिस की तरफ से भी जो करारे शॉट गए हैं, जो चाटे जड़े गए ना सामने को, वो काफी ज्यादा करारे थे और मसालेदार थे। बिल्कुल। अब देखिए स्नाइपर का ना काम क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट जॉब होती है, प्लस बहुत ज्यादा स्किलफुल जॉब होती है। ठीक है, आप हैव टू कीप इट मेंटेन इन डिस्टेंस, उसके साथ आपको एक अच्छा डिस्टेंस का एडवांटेज भी उठाना होता है बिकॉज़ शॉट आप पे नहीं लेगा, और आपको एक अच्छा कवर प्रोवाइड करना होता है। अगर आपने उसमें वहां से हासिल कर दी, यू आर द बेस्ट। लेकिन एक और जॉब होती है, यू हैव टू गो ऑल इन, राइट? देयर इज अ प्लेयर जिसको सब कुछ छोड़ के आगे जाना होता है, उसको पता है उसकी लाइफ तो है रिस्क में, लेकिन अगर वहां पर उसको रिस्क पे रख के वो वैल्यू निकाल रहा है, ही इज द बेस्ट। बोन्स दैट वाज इसका एग्जैक्टली इसका प्राइम एग्जांपल बोन्स है। भाई इनफैक्ट नॉट बोन्स ओनली, उन्होंने तो उसको बहुत परफेक्ट कर दिया था। स्टार्ट जी शॉट्स ने करी थी, तो ठीक है भाई, मेरे हाथ में प्यूरीफायर है, आ जाओ कौन है सामने। और यही चीज है, कंट्रोल मोड में ना ज्यादा फ्लैशी प्लेस नहीं आप दिखा सकते। पहली बात, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव फोकस रहता है, बहुत ज्यादा टेंस रहता है, फ्लैशी नहीं कर सकते, यू हैव टू बी सिंपल। लेकिन इतने सिंपल चीज के लिए भी उन्होंने इतनी ज्यादा परफेक्ट स्ट्रेटजी बिल्कुल। रेवेनेंट का फैन हो चुका हूं मैं बोन्स का फैन हो चुका हूं। दुश्मन के इलाके में जाते हैं, प्रोन करते हुए प्यूरीफायर हाथ में निकालेंगे, सबको देर कर देंगे। आई मीन व्हाट इज दिस यार, उनको मौका तक नहीं दिया गया है कि कुछ हो रहा है उनके पास। उनके ही इलाके में, उनके ही स्पॉन एरिया में आपको जो है एनिमी टीम का एक खिलाड़ी मिल जाएगा जिसके हाथ में प्यूरीफायर है, और वो सबको निस्तो नाबूद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो, तो नाम के अंदर ही आ गई ना बात, तो बोन्स निकाल के लेके आए ओपोनेंट्स की, और क्या चाहिए और क्या चाहिए रेवेनेंट के प्लेयर्स को भी। एंड वो वाली जो बात है, वो जो डायनामिक प्ले है रेवेनेंट का भी, फ्रॉम वन गेम टू द अदर, हार्ड पॉइंट पे भी देखा हमने, सर्च एंड डिस्ट्रॉय पे भी देखा, अलग-अलग जैसा उनका गेम प्ले रहा, वाज वेरी वेरी कमेंडेबल। बट अलोंग विद दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी यहाँ पे दिखा तो दी स्ट्रेटजीज कि इस तरीके से। अब जो ओपोनेंट्स हैं वो भी परख चुके हैं, समझ चुके हैं, अब क्या चेंज लेके आएंगी रेवेनेंट व्हेन दे आर बैक अगेन इन द मैदान। मैं आई थिंक सो थोड़ा सा एक बात पे डिसएग्री करूंगा, दैट इज सारी स्ट्रेटजी नहीं दिखाई है। बिकॉज़ अगर हम कंट्रोल मोड की बात करें ना, जितना मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू द मेटा, स्पैरो इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्किल आपकी हो जाती है, राइट? ऑपरेटर स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी के आई थिंक दैट वाज बैन, लेकिन अगर प्यूरीफायर को अगर कोई बैन करता है, स्पैरो हमने देखा है अभी जिस तरीके से चलाते हैं भाई, एक बार उनके हाथ में आ गए डन, नहीं रोक सकता फिर उनको। तो एग्जीक्यूशन का भी यही चीज हमने देखी है। तो स्टिल दे हैव सम ऐसे चीजें बची उनके अब ऑफ द स्लीव, तो देखते हैं क्या होता है। There's a lot more, बहुत सारी चीजें, एग्जैक्टली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारी यहाँ पे बोलूंगा रणनीति जो तैयार करके ला रखे हमारे पास। क्योंकि वही बात है ना, इंडिया की बेस्ट टीम्स हैं, तो ये थोड़ी ना कि एक स्ट्रैटेजी लेके आ जाएंगे इस मंच पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पास रहेगी यार, ठीक है, दर्जनों स्ट्रैटेजी है भाई, ये वाली काम नहीं करती, ये उठा के निकाल देंगे, बिकॉज इनको जीतना है। कैसे ना कैसे करके भी यहाँ पे जीत निकालनी है। एक प्राइम गोल है कि भाई आज उठे हैं तो मतलब आज जीत के ही रहेंगे, और अपना पूरा ए गेम प्ले आज दिखाने वाले हैं। एब्सोल्युटली, और वो दिखाया भी है। पहला ही गेम यहाँ पे हमारा खत्म जरूर हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारा चर्चा हमारी यहाँ पे जारी रहेंगी आफ्टर अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम जरूर जल्दी से लौटेंगे वापस। मैच 2 का क्या हो गया?
अब आरएनटी वर्सेस ये होगा ना, जो एनिग्मा या रिवर जीतेगी तो उसके अगेंस्ट होगा शायद से, ऐसा होता है ना? हाँ नहीं नहीं, एनिग्मा वर्सेस रिवर होगा भी, फिर जो टीम जाएगा वो जीत जाएगी और उसमें फिर मैच मेकिंग होगा। मतलब अभी जो दो टीम हारेगी ना, इसका वर्सेस निर्वाणा होगा। कम ही कम नेक्स्ट अभी एनिग्मा वर्सेस रिवर है। हाँ अगर मान ले अगर रिवर्ट हार गई तो रिवर्ट वर्सेस निर्वाणा होगा, समझ रहे हो? अच्छा ओके, हाँ लूजर ब्रैकेट जाएंगे ना दोनों। हाँ और भाई रिवर्ट और निर्वाणा का मैच देखने में मजा आएगा। हाँ वो तो है, वो तो रिवर्ट जीतेगी शायद से, लग रहा मेरे को। देखो ये मजा तो आएगा। रिवर्ट पे वुड कैंप है कि नहीं? नहीं है भाई। अच्छा नहीं है ना, लेकिन सारे 10 एमएस 15 एमएस और गीब को भी बैंगलोर में 20-22 एमएस ही आता है। स्कल गाई 10 एमएस पुणे, हाँ इग्नाइट फिकर्स भी वैसे ही है। शांतन को खाली आता है 30-40 एमएस चेन्नई। एक बंदे से फर्क नहीं पड़ेगा। देखो शांतन को ये लोग खिलाते हैं खिलाएंगे क्योंकि नाइट वॉरियर छोड़ के चला गया ना और स्पाई करता रह जाए, जो शांतन को ही खिलाएंगे। इंग्लिश टीम पे क्या चल रहा है? स्टार्ट होने वाला मैच 2 मिनट में। On paper against your English team opponent, का चालू you हो have to be गया good in the शायद 2-3-5, right? You have to ना be ना objective मैं based देख रहा हूँ on इंग्लिश where टीम you में। can kind of control the life count a bit better, set up some good set plays, get yourself really kind of functioning to your playbook, set the tone, set the identity, because things can get out of hand quickly at the hard point, but you have some time to kind of put a bit of a pause and control the flow when you're playing in the 2 and the 3. Yeah, I mean, you never want to be forced to play at the enemy's tempo, right? That's where all of your practice does need to come through, because it is about do or die here. Again, just to frame it up one more time, you don't want to go and lose your first match here in the Swiss format going up against another 0-1 team where it is quite literally do or die. This is where all the fundamentals need to be absolutely on point, and you're right to call out that 2-3-5 aspect. It's just a testament to Call of Duty's history, specifically when we moved over to Hardpoint, Search and Destroy, and even Control as the 3 game modes. You want to make sure that at least 2, if not all 3, can be on point. I do want to be able to give you guys a little bit of an update. Again, we split this opening round of Enigma Swiss action versus into 2 Rebirth, कौन different जीतेगा बताओ? teams. So while we were Fast, watching over the भाई top of the Enigma Nirvana भाई। Revenant matchup, at the same time, एनिग्मा Vitality was जीतेगी तो playing सही, up पर against देखना स्कल बहुत I2K मारेगा Elite, देखना। and that was a स्कल ही तो very है क्या, दूसरा clean कौन है? 3-0 लोअर from Team ब्रैकेट Vitality. I mean, निर्वाणा बस elite है वाह। That's one way of saying. क्या ब्रैकेट्स बनाया? Look, you're 250 to 18 the opening map, जो भी 6 है to 1 the मेरे को surge. इतना मालूम है कि स्कल बहुत elite मारने वाला है। elite vitality से हार गई, उनका मैच दिखाया ही नहीं। Perfect as you would 3-0 expect हार from Team गए। Vitality, looking strong in their opening matchup. They will have to then now play up against Revenant Esports. That's a tough second round. भाई ये किसी का मैच दिखाता क्यों नहीं है? अभी 3-0 elite तो की vitality अब वो दिखाया नहीं मैच। Just the pace is going to be on, the pressure absolutely will be mounted. मैं बोला ना लास्ट टाइम जैसे ही करेगा, एक साथ 2 टीम चलाएगा। And the other side, you got to keep in mind the कितने lower मैचेस round बाकी matches. You है? start to see it बहुत there in the मैचेस बाकी है second ना heat अच्छे। of games that are going on. Not eliminated yet, or I2K कल or सिर्फ टॉप Nirvana. 4 करेगा। You have to win 2 before you lose 2. So for both of those 2 teams, भाई इनको बात मिल you गया। have to be able to take this next अरे match वही that बोल you're रहा set ना, up वो with लास्ट coming up टाइम here in a जैसे किया moment, था, याद है? and then किलवा also लास्ट take the टाइम one to अनब्रोकन follow. पीछे चला रहा है, Not easy by any TRB stretch of चला the रहा है। मैंने तो आज तक देखा ही see नहीं है exactly कोई how the WC, layout पहले comes through. WC है You मेरा win जो 2 देखा games, हूँ। you make हाँ it, you मतलब जो advance. भी You है, get जो भी tomorrow's देखा होगा, 4-team मतलब double elimination bracket, बैकग्राउंड में TRB where का then मैच all of a चला रहा sudden है, the तो pressure अनब्रोकन is पे removed. चला रहा है। Only 2 squads are going to make it out of this ये region to stage लो 5 to represent India at the सेल्फ international प्रोक्लेम stage. सेल्फ प्रोक्लेम भाई। Just think about how अरे cool मैं that तो is. कह रहा था Like, मैं तो मैं देखता भी नहीं thinking about just WC। not only just competing नहीं नहीं भाई समझ गया से to be able to make a name तुम and a छोड़ living के for किलवा। yourself, but to मैं represent बोर हो your रहा था इसलिए country मैं आ at गया COD मुंह Global उठा Worlds, के WC that's लेकर। enough pressure to make you अपेक्स कर want to WC vomit. I'm not देखो going to do भाई। it, I promise, but still, ये nonetheless, that's got to be a lot more pressure for these young esports athletes to be able to put themselves on the line
अगर कोई अभी होता नहीं ना तुम दोनों में से भाई मैं देख ही नहीं होता। एचपी में पता है कितना पीटी है Elite X को Illusion 250-18 250-18 Elite X को 250 और 80 SMD 61 Control 30 is pretty solid and pretty sweet, especially considering that last year. भाई मेरे को Elite X से उम्मीद भी नहीं लग रहा था ये 8 नंबर पे आएगी देखना RDX आ जाएगी 7 नंबर पे। There were still questions at the end of both those finals. Who would have been the best chance to win the international championship? भाई ये किसी को बुलाओ यार। Tribes said that they cleaned their way through the Western Finals. They look like the favorite globally, but that's all question in circumstance. We don't know, but this year we will have a clear-cut answer to see which region is the best in COD Mobile. And India, I know you guys you're passionate out there. You guys always come through. I see you in chat when I'm watching. See you in chat later. We're doing VOD review. You guys are unreal. So keep that passion, that pressure up, because we have to qualify 2 out of what are going to be 5, I think, great teams here from the region. And for this upcoming matchup, who knows? Maybe we'll have a 6 to offer up maybe the hat into the ring, so to speak. Again, I can't sell any of these teams short, right? Because seedings might just be thrown out the window. I mean, yes, we did have just absolute slobber knockers, at least through those opening few rounds, through some of the respawns is what we were talking about from Team Vitality in their opening matchup. But you can never sell short, especially for the seedings, albeit that those seedings were set up in the former stage. There was a decent amount of time for the teams to power up from then until now. Absolutely. Saksham, Techno, Prism, Abhi, Mino, I'm hoping that they're going to put a bit of a show because let's be candid, I think coming off of seeing the loss maybe Techno bench रहेगा Saksham को ही खिलाएंगे देखना LMG के लिए किसको रिप्लेस करेंगे मेरे को लग रहा है Techno की जगह Saksham को खिलाएंगे ये Who knows? I think for this one, I do still stand by the fact that it's kind of an एक unknown बंदा quality what we're going to get out of Fenrir, but the same can be said भाई about एग्री हो जाएंगे अभी वही भाई अगर सक्षम को नहीं खिलाया तो मैं तो जा रहा हूँ सुने Worst Mino सब Prism सब खेलेगा भाई अभी फुल अग्रेसिव मेरे को मतलब ही नहीं मैं क्यों देख रहा हूँ सक्षम खेल रहा है भाई अपना बंदा है इनकी टीम में अभी मीनो था ना पहले मीनो वही करेगा भाई और कौन करेगा सक्षम भाई नॉट प्लेइंग एंड आई नॉट सीइंग रिवर्स का तो कल है ना शायद से या ऑगी है कोई तो है क्या बोल रहे हैं ना रिवर्स का स्कल या फेकर ऑगी नहीं रहेगा अरे ऑगी भाई है वो नहीं पता अरे ऑगी भाई ऑगी को हिंदी नहीं आता अरे आता है लेट देम प्ले ओबीजे बोलेगा नाइस वन ब्रो बोलेगा ओपी जॉन नाइस बीच में दे दिया भाई क्या दिख गया आ गया लो लाइनअप आ गया ऑगी फेक्स इग्नाइट कल गए शांतन ये हिंदी क्यों दिख रहा है हिंदी क्या अरे वो लाइनअप दिखा रहा है खाली मैच इंग्लिश में पहले अगर हम बात करें नहीं हो सकता है अभी इक्वल हो जाए क्योंकि टाइम मिला ना कवर अप करने का सबकी सब टीम जो यहाँ पे हमारे सामने खेल रही है सारे के सारे प्लेयर्स जो हमारे सामने खेल रहे हैं दे आर द बोलते बहुत है ना ये लोग इसलिए प्रॉब्लम होता है बोला कि वो ग्राइंड करते हुए यहाँ तक पहुंचे 1 साल से लगे हुए इतने सारे अलग मीनो नहीं खेल रहा सक्षम भाई मैं जा रहा हूँ गुड नाइट उससे भी सीखे एंड अब हिंदी का मैच स्टार्ट हो गया brings down to 2 days नहीं यार उन्हें वो लाइनअप दिखा रहा है इसके अंदर हमारी मैं जा रहा हूं सोने उसी के साथ ओपन की बात करें तो रहेगी भाई सक्षम को बेंच कर दिया एग्जैक्टली लास्ट प्लेयर्स आई मीन एनिग्मा के नहीं सक्षम तो प्रोफेसर मिल गया एनिग्मा वालों को खिलाना चाहिए मैं बताना चाहूंगा टीम भले ही नहीं हो प्लेयर्स पुराने हैं बिल्कुल प्लेयर्स ऐसे हैं कि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा तरीके से अपनी जो दबदबा है ना वो बना रखे हैं खेलते जब है ना तो इनका गेम प्ले देखने लायक हो जाता है बिकॉज़ अगर आपने आंख भी झपका दी ना तो आप एक्शन मिस कर दोगे ट्रू दैट इज वेरी ट्रू दैट इज सो वेरी ट्रू बिकॉज़ इतना ज्यादा क्लोज बैटल चल जाते हैं और इतना ज्यादा फास्ट पेस भी होता है ऑफ कोर्स गेम तो वहां पे अगेन अगर आपकी टीम की मैं बात करना चाहूंगा अब सिनर्जी के बारे में अगर बिकॉज़ आपके पास इतना टाइम नहीं है मौका नहीं है कि आप वहां पे चर्चा करो गेम के अंदर और ये बताओ ये कर भाई या वो कर बिकॉज़ वो तो पहले से ही पूरी ग्राइंड जो चल रही है उसके बेसिस पे चलेगा तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा ऐड ऑन कर पाए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वो अगर आप सिनर्जी की बात करो जैसे आपने कहा गेम में हमारे पास टाइम नहीं रहता अगर हम लॉन्गेस्ट गेम मोड की बात करें तो हमारे पास सर्च एंड डिस्ट्रॉय है पर राउंड हमें 2 मिनट
का टाइम रहता है एंड 2 मिनट में आप कितना ही डिस्कस करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो सिनर्जी रहता है कि प्लेयर्स किस तरीके से सोचते हैं, उन लोग का जो मेंटालिटी है वो कितना सही है। अगर बहुत बार हमने टीम्स को बोलते हुए सुना है कि हमारी इतनी अच्छी मेंटालिटी है, हम लोग को कम्युनिकेट भी नहीं करने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं होती है और अपने आप ही आपका जो खिलाड़ी है, आपका जो टीममेट है वो पीछे पहले ही खड़ा है 6 में, तो वो वाली चीज हो जाती है इसके साथ में बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सीरीज। ये किया तो किया क्यों, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला तो अगेन द बैंड्स कमिंग इन राइट देखता ही नहीं 2 घंटे से। Exactly, लो भाई सक्षम भाई का रिप्लाई भी आ गया, मतलब मतलब नहीं खेल रहे सक्षम भाई आज। लेकिन अगर बात करें बैन्स की तो हेसिएंडा की बात कर रहा हूँ, ये मैप जो है बैन हो चुका है फ्रॉम द साइड ऑफ फेंडर रिबर्थ। लेकिन अगर हम बात करें रेड मैप का तो रेड मैप बैन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं एनिग्मा गेमिंग की तरफ से व्हिच इज वेरी गुड थिंग। अगर हम बात करें बिकॉज मुझे ये जरूर से पता कि हाँ रेड मैप पे ना फेंडर रिबर्थ का कोई तोड़ नहीं था। बिल्कुल यहाँ पे ये चीज तो देखने को मिली कि लाइक आइदर आप अपना वर्स्ट मैप बैन करो या ओपोनेंट्स का बेस्ट मैप बैन करो, एंड यहाँ पे दोनों ही टीम से ओपोनेंट्स का लाइक द बेस्ट मैप को बैन किया। तो अभी जो हमारा गेम है वो काफी इवन चलने वाला है, क्योंकि अगर आप पहला गेम में देखो फायरिंग रेंज है, इस मैप को हम सब जानते हैं एंड उस पे हार्ड पॉइंट, तो लाइक आपको एंटायर मैप घूमना पड़ेगा तो सेकंड एंड थर्ड हार्ड पॉइंट। तो वो चीज यहाँ पे काफी सारी लाइक पूरा एक जो फ्लो है पूरे गेम का, आज जो बेस्ट ऑफ 5 का फ्लो फायरिंग रेंज तो रिवर्स निकाली हुई लग रहा है मेरे को। एब्सोल्युटली वो डायनामिक प्ले जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ऐसे मैप की बात करें। अब इसके अंदर अगर आप दोनों से मैं पूछूं कि आप दोनों का बेस्ट मैप आपको कौन सा पसंद है? ओके फॉर मी इट वुड बी स्टैंड ऑफ, क्योंकि अगेन स्टैंड ऑफ में ग्रैंड नहीं है वो मेरा भाई मेरे को बस इतना लग रहा है शब्द तक नेगेटिव ना चला जाए, जो रोटेशंस होते हैं, जो एक ब्रेन गेम हम लोग को देखने को मिलता है लाइक है कौन हो तरीके से। अगर आप अबे स्टैंड ऑफ लाइक बेस्ट फॉर एनी गेम, अगर आप पहले हमारे पास डोमिनेशन था उसमें काफी अच्छा मैप था एंड देन भी काफी अच्छा मैप आपको भाई तू देखना रिवर्स में खेल रहा है। अबे शांतन आइडियल फिर लाइक वहां पे वॉल बैंक स्पॉट्स है, इट्स लाइक उन्होंने सारे हाँ स्टार्टिंग में दिखाया था ना उनने सारे आईजीएल का इंटरव्यूज, अभी को दिखाया था, अभी को दिखाया था। भाई वो इंटरव्यू कोई भी दे देता है, अभी थोड़ी ना ऐसा है क्या? मतलब सिर्फ आईजीएल है। अरे अभी आरएनटी में क्या बोलते हैं इसको दिखाया, अभी इसको और क्या बोलते हैं डोप को दिखाया रखा है, बढ़िया तरीके से खेलती आ रही है, एक के बाद एक कोई भी दे दे टीम को डाउन और एलिमिनेट करते हुए दिखाई दी है। लेकिन आईजीएल तो है बोन एनिग्मा के प्लेयर्स की ये भी कुछ कम नहीं है, ओजी प्लेयर्स है पहले ही सामने इतने टाइम से बहुत बुरा लग रहा है। एनवी में कौन आईजीएल करते हैं, वो वाला दबदबा भी उनकी तरफ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस गेम के अंदर। अब अगर हम आगे बढ़े BO5 की अगर बात करें तो क्या आप लोग प्रेडिक्ट करते हो कि यहाँ पे जो सक्षम को क्यों नहीं खिला रहे भाई, क्या है ये? पहले सर मैं ओके तो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे मेरे हिसाब से तेरी गलती है ये वो सब तेरी गलती पनौती साले, तो मैं बहुत तेरे वजह से नहीं खेल रहा। पहले बोला था कुछ तो होने वाला है। लगाना चाहूंगा कि यहाँ पे एनिग्मा भाई क्या फायदा, मेरे को फीलिंग आ रही थी थोड़ी सी अंदर से। बिल्कुल अरे मैं भी एग्री करूंगा बट हो गए ना 2 घंटे बर्बाद हो गए मेरे तो। ओके लाइक यहाँ पे अरे सक्षम खेल रहा है तो उनके पास भी रैंक वॉरियर्स एंड रैंक में जो हम लोग को नए-नए कहाँ खेल रहा है, नहीं खेल रहा मैं बोला टेक्नो बेंच है, कोई रैंक का रैंक ओए सक्षम ये सक्षम कहां पे चल रहा है? अगर कॉम्पिटिटिव में एक्सपेरिमेंट अंग्रेजी तेरे को आती है अरे लौंडा पर 500 किल गिरा दे मजा आ जाएगा। भाई मैं तो भाई 5-6 लाख किल गिरा दे सक्षम, बिग फैन। यू नो व्हाट chill बन जा। Yes, very good सक्षम। Singing a tune from up top of the sniper tower, now moving down to the low ground. Skull guy able to shut down. अरे क्या यार आरपीडी में चला होल कर निकाल। Try to avoid that trailer position. अभी भाई हेलो अभी भाई ने तो चिल्ला चालू भी कर दिया। Exactly why. We've already got a Pred missile earned up and सभी हो रहे हो, पागल हो गया है। अभी इस भाई का तो गोल आया था आगे, ये तो चीटिंग हो गई। अरे 10 किल 10 किल स्ट्रीक न्यू बना ले। Good help coming through to make sure that these continue to play their life. You need to try to at least try to wait for some of your respawns. If you are Reaper, don't मैं कह रहा हूँ एनिग्मा जीतना नहीं। मैं बता रहा ना तेरे को इलू, अबे इलू मैं तेरे को बता रहा ना रिबर्थ में स्पाइक और नाइट वॉरियर जब तक ना शाम तक के साथ नहीं चल रहा है। मैं इनका सिर्फ रिजल्ट्स देखता हूँ ना,
Only the सिर्फ कल Now का ही this is the thing मारता that I है really want to be curious through for Fenrir. और Can उनकी you find a way just to make हाँ life a स्पाइक little बहुत bit more मारता है भाई difficult on a मजाक team सट that's के already बोल रहा built up a रिबर्ट ton ने of advantages when it comes to score डोमिनेट streaks हो and जाएगी ये potentially early specialist charge? And this is a great सैंटन का जीरो position. गन फाइट Agi up towards top 10 will make life hard on the rotation over towards trailer. That said, though, Enigma are taking some अभी तो long पागल हो गया भाई contain Rebirth भाई in तुम towards देखो the ना कैसे bottom corner डोमिनेट of हो the गई minimap, अभी and they've done very well to do that. In fact, they've already flipped the अबे वो तो spawns खेल ही around. नहीं सकता ना Alive and स्पाइक back for Fenrir would be स्पाइक नहीं खेला ना इसलिए उन्होंने शांतन को लिया Enigma किल who हुआ have a chance वही तो to बोल रहा मैं तब से get a favorable look here. अंडर है जना वो भी स्पाइक शायद से हाँ स्पाइक 16 साल का है अरे और ये नाइट बात वॉरियर टीम छोड़ दिया आई थिंक lead, you can absolutely afford to send players on a long route, 3 players strong तो at चार that. बंदे बचे तो इन्होंने शांतन को ले लिया तुम देखो भाई क्या भाई होगा नाइट भी बहुत प्यारा खेलता था वैसे वही बोला ना नाइट टीम छोड़ दिया शायद पंप ही छोड़ दिया Get themselves ready from those respawns. Try to overwhelm some of these pressure points that Enigma are setting up KD for भाई themselves. KD मेंटेन नहीं है It's just it's एक so स्पाइक का tough. गली गली चल This रहा है position अबे backside trailer शांतन can 3 find 11 so much फेकस value, 4 and you're 13 starting to see that really कल come का ही to life 5 as 11 almost इग्नाइट दे रहा everybody नहीं on the जीतते side भाई of अगर the have gotten the गन double फाइट ही नहीं digit जीत kills. रहे The अरे हो only गया one who's इनका not there yet is Ghost, and mostly because he's been in the भाई ये hard तो point. निर्वाणा से भी He's खराब just खेल रहे हैं cruising and killing अरे everything around स्कल him. गाय मार So it's लेता तो भी कुछ हो 127 to सकता था 14, the वो current भी यहाँ tally. पे Goliath कुछ is नहीं हो already सकता in as we looked over towards the rotation to New, which और will be over शांतन भाई towards का Wood. किला है And for Fenrir Rebirth, I will say अरे damage यो not ना बात mitigated. सक्षम They're in a लौंडे very dangerous spot here early. मार दे 500 गिल डरने की बात ही नहीं फुल सपोर्ट भाई मीनो क्या मार रहा है मीनो अभी धो रहा है भाई I haven't seen a hardpoint score like this in my day for quite some time. 146 v 14. Half score touch? Already got yourself Question a mark? Goliath to play with if you are B. Started off hot, continuing on that streak. And I just love the utility usage here from Enigma. You got the Goliath hard focus on the backside trail. अरे हमारे सक्षम को देख आरबीडी चला रहा है वो मेटा नहीं चला था गीगा जेड He's actually let a couple of players slip by. This is largely being picked up by Enigma, but this isn't the cleanest Goliath we've seen in the world, especially considering it's essentially just one by one they come, one by one they fall. Fenrir will contest some damage down to Aviz. भाई इनका गुलायत नहीं तोड़ पा रहे अब तक ये इतनी देर हो गई भाई इतनी खराब तो रिबर्ट नहीं खेलती है हेलो मैप कंट्रोल गया भाई अब तक गुलायत नहीं टूटा है नहीं अभी कुछ कर ही नहीं सकते कोस्टिक्स आ चुकी है solo challenging it 1v1 they go in one by one they will fall रोटेशन मारेंगे प्लेट डालेंगे वो मुंह पे भाई कल का ही सबको गाली देगा मैच के बाद देखना टीम वालों को ना अरे वाह सक्षम 15-7 और 15-8 तो कोई नहीं और 20 किल कर दे मजा आ जाएगा भाई फेकस 5-20 जा रहा है हेलो शांतन भाई का नहीं निकला You have to get something done here. Absolutely need to win. अरे घोस्ट भी तो है भाई अरे भाई एनिग्मा में घोस्ट भी तो है हां अभी सब मिनो केडी देखो ना ओ भाई मिनो 25 9 Shanton still holding on as an annihilator and he gets completely pinned on. Oh boy. Not good news. अरे हमारा बॉस कम है क्या 17-8 Yeah. Go ahead and throw this vehicle on the cruise control. हमारा बॉस कम थे का even double digit deaths. He's just vibing. Yeah, he's भाई ये तो भाई चिलिंग हो रही है अब तो मेरे को लग रहा है just finding yourself isolated engagements. थोड़ा सा रिबर्ट अब पकड़ी है भाई इनका किल्स आ रहे हैं अगर स्पॉन ट्रैप दे दे टायर्स में तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स क्रॉस कर देगा मीनो भाई पता ही नहीं इनको क्या चल रहा है No answer 1v2 even why not give it a Mino there's just no answer at all around. Yeah, and I Shantan right bhai. now, but look, we were looking forward to seeing if Fakes was going to be able to kind of put some ये pressure तो on here. छील दिया भाई He has 5 kills at the moment. Not good enough. Not great news. Not great news at all. So this is what it looks like to play up against Enigma Gaming. I don't think necessarily we were looking at अरे this saying 31-9 ओए 34-6 ये क्या चल रहा है भाई we're going to make this a little bit tighter than we're currently seeing. अबे ये वेक्स कौन है Looking like it's going to be 250 to 19. अबे ये वेक्स कौन अबे रेजर ये वेक्स कौन है पहली बार देख रहा हूं अरे भाई उसने भी चीला भाई वेक्स ने भी मारा बहुत प्रिज्म ने बहुत मारा
I mean, look, भाई you're saying that this was going to be a hard-fought battle, but I definitely was thinking that Fenrir ये तो धुलाई हो गई ये बहुत मतलब ज्यादा। यार अनएक्सपेक्टेड था मेरे को लगा बहुत इक्वल इक्वल चल रहा है। सीधे सीधी बात है इनो मैं तेरे को क्या बोला भाई You just had to be able to get yourself some semblance of a power position, get yourself top wood, भाई get yourself spike in the middle of the map, isolate some of these engagements with those annihilators. Spike They under just it. weren't finding the kills. They were constantly getting slid on by players like Abiz. 35 leaderboard player on top, with a minute and 31 worth of hard point time. I mean, keep in mind you most of that यार was हमारा when they were vibing out with the Goliath, sure. but ऑगी outside भाई of that, एक they ही were just बंदा है almost जो everywhere to find 1430 भाई है। धर दिया भाई, भाई भर दिया भाई। भगवान ने तो धर दिया भाई पकड़ के। Nearly a minute plus for our time. I mean, there really wasn't much for Shaksham or Ghost to do. सबसे ज़्यादा Flat out. They got a lot of assists in, which is always nice to see, but on the other side, 5 and 28 on fakes, just not stepping up. When I think a lot of ये the तो वही spotlight हो was गया, really towards him, especially NS considering without that he is Killua। the one returning member from last year that was playing and was part of that true Gaming Rivers कर team दिया that, hey, they qualified as a 4th place position in the Indian region. देखो, weren't able to get it done in the Eastern Finals. River Not they could can get come out of back. groups, but like, hey, you represented one of the top 4 teams. 250 some of that greatness to come through. हो क्या रे भाई अभी तो vitality going up against former teammate of Tech now, just it's just one of those things again. और वो तो चलो ठीक है, फायरिंग अब एसएनडी है और उसमें हमारा बॉस खेल रहा है और भाई एसएनडी पर वो स्नाइपिंग नहीं करता ना हमारा बॉस आजकल। अगर वो स्नाइपिंग करता ना एसएनडी में निकाल सकती है रिपर, नहीं निकाल सकती, जानते नहीं है। मतलब रिस्पॉन में तो जानते नहीं है, वो तो है। अबे अभी और ये प्रिज्म और मीनो क्या मार रहे हैं भाई, तू देख तो सही। भाई बोला ना तीनों बंदे घुसेंगे भाई। ये चीज निर्वाणा के साथ भी हुआ really going to show those advantages. करके कुछ भी हो सकता due to the fact that they can string together. अरे हमारा सबसे बड़ा कैंपर है ना सक्षम बॉस, भूल गया क्या तू, कोने कोने में बैठेगा पता भी नहीं चलेगा। Maybe even find अपनी R9 निकाल लेगा कोने में बैठ के। It's just I don't know. I just don't feel great about even if you extend this series to a map 4. Being able to do any better in the respawn on slots. The versions you are using, that is like you have to be able to go multi-kill per life if you want to be able to win rotations on that map, and we didn't really see it in firing range, and I think expectations. We didn't see any rotation in firing range, so that's what it's matter. Your best bet is in the 2 and 3 and 5 if you are Fenrir, right? Because at least you do have some sort of an idea that you can slow down the pace slightly. But I mean, we even got to see even on the control and firing range in our first series that it may not even matter. The team that is just feeling hot is just going to start running at you, is going to be finding those multi-kills that you continuously talk about there, Alan, and the standoff search and destroy. Again, this is a map I don't remember when Black Ops 2 came out and how long standoff has honestly been around. It's a long time ago. It's a long time ago. It's one of those things that you have to know where these power positions are going to be in lie. You have to be able to know where you can find value with your nades earlier on, and you have to be able to work your hot hand for those first bloods to be able to keep the more aggressive team honest. We saw that come through in our first series of the day. There's absolutely no reason why Fenrir Rebirth can't do it here. And I think the thing about it too, with a map like Standoff, like, hey, sniper rifle gameplay, long range LMGs can still come out to play here and control spaces of the map that are. भाई मैं वो गॉर्डन वैसे आडियंस देखना मजाक से एक्टिव होगा। मैं उसी के लिए देख रहा था। मैं उसी। Importantly, from Granny's Top Bakery. Hey man, hey, you can really make life difficult for your opponents. I think those are the keys here. And who knows, maybe it is just one good sniper. That's all you might need to really get yourself going and maybe try to control flow of the map. Because I mean, hey, it's a giant intersection, literally right through the middle of the map here. So if you could kind of separate the map into 2 halves, your ability to isolate should be high. But of course, again, we're back onto our theory crafting, which we always are prone to do. I think the biggest thing here is you have to eliminate all doubt. I think if you're unexpected, I mean, we have a clear-cut 2 favorites. I think for everyone in the region. You're looking at Godlike, you're looking at Team Vitality. The next 2 teams to qualify, there's more of a question mark around it. Like this Enigma team, especially with what we saw from Revenant, can Nirvana bounce back? You have to feel like at a certain moment in time, those 3 teams will still find a way to meet each other again to try to get to tomorrow in the first place, because we can't take 5, we can only take 4. You're not wrong there. That's some great usage of numbers, my friend. And yeah, this is again. चलो 6 बजे मिलेंगे अब, बाय बाय। Composure on the grandest stage of it all here in regionals needs to be exemplified here, specifically for Fenrir, right? Because you have to be able to come to grips with it.
you just got smoked in that opening hard point. But again, coming into the search and destroy, just wipe the slate clean, come in, play your game. Do not allow Enigma to fully take over with that tempo that they were able to exemplify there in the opening map. Have to have it. You just have to. So that's the frame up. That's everything we can talk about when it comes down to the standoff. Search was waiting on the players, and we will be in lobby hopefully very, very soon. Again, just as a reminder, if you joined us here late, Godlike and RDX are currently playing. Let's see if I can find if there's an update. Yeah. The answer is yes. Oh, you sure you want to share that? I think we have to, because I just framed it all up. Godlike Esports, I just got to adjust myself here to make sure there's 257 250 to 7 on a takeoff hard point. That favored Godlike Esports, in case you're wondering. Oh, okay. 257. Well, yeah, I mean, it's gotta be a tough matchup, right? I mean, you come in, you're already भाई expected है जब ये Godlike comes in. I mean, 17 भाई तो RDX से तो कोई उम्मीद भी नहीं है. RDX का ऐसी T3 टीम है. वो मौका मिल चुका उसको यहाँ पे अपनी घायलता, क्योंकि वही बात है, घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होता है और जब वो झपट्टा मारेगा ना तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो आउटकम है वो जनरेट होने वाला है. एंड अगेन उसका किस तरीके का रिप्लाई हम देख पाएंगे वो भी पता चल जाएगा कि कितना डायनामिक आप फेनिक्स रीबर्थ जिस तरीके से अपना अप्रोच रखेगी. एंड उसको अगेन रिप्लाई करने के लिए एनिग्मा तो बैठी है, वो तो सारे के सारे प्लेयर्स की हमने बात करी. दे आर द क्लास व्हेन इट कम्स टू द वे दे प्ले, बट दैट इज नॉट इट, बिकॉज यहाँ पे जो ये मौका है सारे की सारी टीम्स इस मंच तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 टीम आगे बढ़ने वाली हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी. आज के दिन में हमें पता चलेगा वो 4 टीमें कौन सी जो कल खेलेंगी एंड उनमें से फिर 2 आगे बढ़ेंगी. लेकिन इन ऑल ऑफ दैट जितनी भी टीम्स हम खेल रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, all of them they just want one thing, इंडिया को रिप्रेजेंट करना. 4 टीम कल खेलेंगी मतलब करना है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट आज करना खत्म नहीं चार टीम मतलब तिरंगा लहरा के आगे जाना है उसका ये और वहां पे जीत के आना है. ये कहीं ना कहीं जो एक मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, 4 टीम्स निकल जाएगी अपने अंदर लगा लेंगे ना, जिस तरीके से खुद को मोटिवेट कर देगी. बिल्कुल अब जो गेम प्ले ना एक अलग रुख ले लेगा, अलग एक मोड ले लेगा एंड वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अब यहाँ पे सेम बात आ जाती है स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो ये जो फर्स्ट गेम था वो तो एनिग्मा को ज्यादा ही इजीली अपने तरफ लेते हुए गई, स्मूथ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ. मतलब 19 पॉइंट फेनिक्स रीबर्थ भी सोचेंगे अरे 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 ये तो अब ये गलत हो गया, ये तो अब गलत हो गया, अब ये तो किसी तरह हमें वापस जवाब देना ही देना है. एंड ये जो अब आगे आने वाला स्टैंड ऑफ का सर्च एंड डिस्ट्रॉय के अंदर, उसके अंदर उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी. अगर वहां पे नहीं किया तो फिर तो डू एंड डाई सिचुएशन में. एग्जैक्टली राइट. उसके बाद अगर एक भी गलती से भी जीत गए अगला वाला राउंड तो BO5 का कोई मतलब मैं बोलूंगा यूज हो तो वो दिखाई नहीं देगा. एग्जैक्टली खत्म हो गया आपका गेम प्ले, आप घर वापसी करोगे फिर. नहीं घर नहीं वापसी करोगे. वही बात है कि आपको एक मौका और मिलेगा. जी बिल्कुल. लेकिन वो ये वाली बात पे आ जाती है कार्नेज. उसके अंदर जब आप वो लो ब्रैकेट में आओ तो लो ब्रैकेट में फिर वो और आपके उसके ऊपर आती है कि हम और शान से आगे वाला गेम खेलेंगे, और ज्यादा अच्छे से हम अपने आप को इंप्रूव करके खेलना चाहेंगे. एंड अगेन इस गेम की अगर बात करें फेनिक्स रीबर्थ जिस तरीके से खेली, यस गलतियां काफी थी, लेकिन आपके ख्याल से क्या वो वहां पे चेंज, जो क्रिटिकल चेंज आपके ख्याल से जो वो कर सकते थे टू रिप्लाई अगेंस्ट एनिग्मा's कंट्रोल? लाइक एनिग्मा इन जनरल वो एक प्रॉपर लाइक 5-man स्टैक खेल रही है. एंड जिस तरीके से उनका हर एक हार्ड पॉइंट पे हम लोग को होल्ड देखने में मिल रहा है. लाइक अभी बाहर बैठे हुए मिनो हंट पे एंड लाइक इनसाइड हार्ड पॉइंट 1 या 2 प्लेयर्स आपको देखने को मिल ही रहे थे. एंड देयर वर इवन टाइम्स जहां पे हार्ड पॉइंट के अंदर कोई प्लेयर था भी नहीं, सारे प्लेयर्स हंट कर रहे हैं. तो दैट वाज लाइक एनिग्मा थोड़ा सा वहां पे कहीं ना कहीं लगी थी कि एनिग्मा इज बीइंग अ कॉकी, बट स्टिल वहां पे आई वुड से जो मैंने कहा था कि मिनो के सुप्रीमेसी पे मेरे को बिलीव है. राइट, दैट इज अ फैक्ट. बट लाइक अगर मेरे को फेनिक्स रीबर्थ रॉन्ग भी प्रूव करते हैं, आई एम नॉट सैड, क्योंकि वो because Enigma are double hitting this from the side, and they do lose Skull guys. So now it's just down to Ignite. Bomb is planted for him over the top of the barrel. Sees the first, cleans it up very nicely, and now a 1v1. Repositions backside tank. Here's the contest. Sees the information with the shoulder. Now over the top. 1v1. Rotating back though, looking for maybe trying to hop onto the defuse here, trying to bait it through. Here comes the shots. Ignite sees that no defuse here at the moment. Tapping it again as the bees. 13 seconds, has to hold now. Ignite needs to check this over the top of the barrel. Abiz gets scared off the defuse. Now he has to hold it. And Ignite, there's really no reason he loses this. And yeah, good cleanup from Ignite in the 1v2. So well played there from Ignite. I mean, even in the 1v2, yes, but throughout the entirety of that round, Alan, he was playing in one of those key positions that I was highlighting in our pre-podcast conversations about standoff, search, and destroy, just over by that statue. Such a nice power position to hold for yourself, as soon as the AXQ came through, was zoning away players on the backside of Q.
And how about the early sniper pressure? We talked about the setup. Going to have to come through. Maybe following an advantage here for Rebirth. Keep an eye on Skullguy to see what he could do. The B's on the opposite side, going to be countering the snipe. Similar setup here, though, from the side of Enigma. 3-2 split. With Bees largely watching the middle of the map. And for now, Rebirth happy to kind of feel things out. So 5v5. Some shots at least coming through. A little bit different of a forward approach coming through from Shanton inside a top hotel. One player that was able to work their way inside of this specific position defensively, and that was Vex. Just going to be playing on the backside of that alley, just outside of Delhi, along with 2 of their teammates. Enigma's giving away nothing here. Love to see that after what we saw in the first opening round. Second nades coming through, and it's a sniper battle that happens over the middle of the map. It's a Bees who falls. Goes to be able to get one back. Go 4v4, but Ignite is able to still try to get a trade position, and they've got numbers over towards A. Defensively, Enigma have to get a rotation on the backside of B. But Mino! Off screen, he gets a double, and the third! Oh my God, how has he done that? Fakes him, at least get one back, but a punishing play by the sole defender at Enigma. Unfortunately, not caught at all on screen, but Mino, he's done it all. Oh, and they know exactly where Fakes is located. He's going to get crossed up from behind by Vex. You call him a sole defender. I call him the true sole guardian of the AS&D over there. There is just no excuse whatsoever. I mean, he gets triple challenged on the backside of the AS&D. Someone should have traded. I mean, maybe he gets to that double. Then the third comes through. I would hope that Mino was weak. It looked like he was, at least on the UI. Yeah. A big bounce back there after losing the initial round for Enigma on the defense. That's going to feel terrible for Fender. You think he should be up 2-0 right now. Abiz, top granny window. Looking for crosses over towards statue. Nothing there, at least not initially. Hit marker twice through the brick. Okay. Strong bricks. I mean, are they? So again, this is a very similar setup coming out from Fenrir Rebirth. What we've seen in their previous 2 offenses. Again, just the slight adaptation coming through. You put Shanton in top hotel. Player at least watching the flank on the backside of that alley. That's going to be Fakes, but Vex is not necessarily trying to take a much more forward approach. They're just trying to play off the information by way of the sniper rifles. Yeah. Relocated on the backside of this tank. Tough scenes right now as far as how do you get in. Especially as Shocksum's able to find one over towards statue. Abi's still watching through mid-map. Doesn't need to give away anything here. Just keep watching over your top of your teammates. Looking for something fence line. Nothing on the jumps. The bomb is starting to make a move. Skullguy looking to try to pick through the windows of Delhi. Nothing up there. But here comes the play forward. Defensively, some space given up here. Enigma cannot actually see this plant. They're trusting that Abiz can watch the cross. And as Mino gets a kill over through A, he can now push around the back side of this, and all of a sudden, Fender is completely trapped. Yeah, just nowhere to go. You know exactly where the last player is located at. Skullguy, he has to put on something. A magic show, and although they do well to at least find a couple, it's all just but inevitable. The numbers just too much to bear there. Again, just understanding what is the task at hand for Enigma. They get caught with the aggression in the very first round. Ever since then, it is just tempered aggression, waiting for the information by way of Abiz's sniper, and take approaches soon after. Oh, backly push. A little bit of tempo here in the round number 4 from Fenrir. Around the back works out nicely as they clear out Delhi. Shocksum's the only one around to try to defend against this, and he can only get 1 for his efforts. But the quick rotation of Beats gets a quick scope off by the look of it onto Shanton. And oh boy, how about the rotation coming through? You have Mino is able to push over towards A, but Skullguy once again takes another one down, and the numbers start to trend in favor of Fenrir Rebirth. Nice यार, इस स्टार्ट में को सही लगा वो. Hold that angle continuously. दो बंदे बैक के लिए मार के निकल गए पीछे one position over by the BS&D. Maybe you might be able to get some help here from Abiz, who was still up top. He's trying to hold on to these angles, and they're thinking that the flank is going to be coming through. भाई कौन सोड लेटा है वहाँ पे? Sometime soon. Still a minute left to play, and Fenrir Rebirth are thinking about another rotation and maybe try to get on the backside of Delhi once again. You just you can't get nervous or shaky in moments like this. You've got numbers advantage. Yeah, Mino's still alive. You're a little terrified of that because last time you had numbers, you shut it down completely. But you just have to play good trades here. Just play the 3v2 as a collective. Oh, not good. Abiz gets the opener. Has a KSP in his back pocket to use. Ignite.
Looks like he wants the 1v1, gets caught on the mantle. Ah, man, I just would have loved to see them play it as a 3-man hit. Just one of those fundamentals needs to be executed. The hesitation comes through, and the collapse soon to follow by way of Abiz finding himself isolated 1v1s. Nade over towards BS&D. At least keep it clear for the time being. And, well, Skullguy actually clears out from the BS&D itself. Outside a hotel, we'll find one, but Abiz with the sniper rifle yet again, because of course it is. Lets them have it. I mean, you give this guy so many isolated 1v1s, you can't throw shoulders with this guy. No. Abiz और Mino तो क्या ही खेल रहे हैं भाई. The fact that Skullguy gets the opener is just it's a sniper duel. It's snipers at dawn for the final 1v1. Nearly a chance off the cross. Abiz, yeah, sure, why not? Almost gets the second. And also read that there's a third one nearby. And look at the setup. Saksha, Ghost, ready for it, no problem. And even though Skullguy will get one back. And how about it? Wait a second. Fakes actually opens up more space over through Delhi. Maybe still a chance for Fender to fight this off, but Vex makes the quick rotation on the flank, clears out Bakery, and it leaves Fakes by himself. Is not exactly in the most comfortable position, and you yourself, Fakes, you are not in a comfortable position at all. Here comes the collapse. Looks like Mino is trying to find himself at least an isolated engagement, but they know that you have him trapped inside top. Dramon's the mantle out the window. Will find absolutely nothing. How about that, huh? 4 rounds on the bounce coming through. That is just absurd scenes coming through from Enigma. Again, it was the opening offense, yes, coming through from Rebirth, but you really do feel like this should be a 3-2 half if Mino doesn't find 3 kills over by the AS&D. Yeah, I 100% agree with that. So now things start to become dire for Fenrir. Have to have this round. Once again, Abiz has been a problem. Nade topside window, not going to connect with anything initially. Fenrir still looking to make a play over towards the backside of gas station, at least largely speaking with the numbers, but not much to be found here. Vex is just kind of holding a heady over the top of the dumpster. And Fakes isn't even going to bother challenging. So once again, it's just the onus is on to Fenrir. What is the first play going to be, and can you find a way to get even trades or maybe even find an early numbers advantage and then just hold the numbers advantage as you try to get the bomb down? Just struggling to be able to find any sort of information. And Skullguy travels out past statue. They'll lose their life. 4v5 we go. It's tough. And they know that this is the same default setup that Fenrir Rebirth has thrown at them for about 3 offenses in a row. Yep. And I think the biggest part about this is now that Skullguy has fallen, he has been the guy to really kind of help get a bounce back into play. Yeah. So you're missing one of your X factors on this offensive look without numbers here for Fenrir. 4v5, 50 seconds to play with. On the jump, Shantan should have seen that. Now, granted, of course, we're staring right at him because he's highlighted in blue, and Shantan could have been looking at something different, but that's what you need to be looking at, is who's playing these little jump peaks. And it looks like maybe some information has been given because Fenrir are hard focused on the jump up as they look to make a move over towards it. Here comes at least that number challenge coming all the way through, but who's on the backside of the site itself? It will be Ghost. He does well to at least find the trade after Mino does fall. 4v2, time becoming an absolute of a nuisance, and the slide shout comes out. Vex lets them have it. हो गया guys, Enigma जीतने वाली है. Future बता दे रहा हूँ तुम लोग को. As you were saying, they lost Skullguy on that statue. We'll have herself a 5-1 half. Sufficiently in the favor. 2 rounds away. Enigma just really good off the adaptations off that initial round. Oh boy. Not great news here for Fenrir. I think a lot of people were thinking maybe there was a chance here in the Search and Destroy. But so far, pretty much empty. Mino, first blood over towards a follow-up from Ghost. We'll get the numbers, but Skullguy backside take. How good has Skullguy been with this scope? Shuts down the play, puts a bit of a pause here into Enigma's step towards the A site, but 2v3 with clearance, maybe a chance to still get a plant off. And this is the execute that we wanted to see from Fenrir Rebirth continuously, but it's the offense coming through from Enigma, but they're all trapped over here. The collapse soon to follow. Shantan Fakes immediately coming through on the flank of the statue. Those are the things you love to see, and I will absolutely reprise that song. Yeah, Skullguy with the sniper has been very, very good for this Fenrir Rebirth roster. It just comes down to making sure that they play their life continuously because they are finding a decent amount of value, making sure that Enigma have to stay honest with the pressure. I think Augie is on 0 kill, bro. Man, Skullguy's been the X factor. Has to stay that way, it feels like. Abiz searching for him, wants the 1v1, saying, all right, I see you. Little jump peek coming over the top, trying to see if we can find anything through the fence lines, but once again, passive setup here for Fenrir. Not even getting close towards Cubby at A. Everything's just on the backside of both of these two sites. And, you know, I like the idea you're still forcing Enigma to make the first play, but
you have to do something besides rely on Skull Guy to get first bloods for you. Same angle. Seems like it's all on the shoulders of Skull Guy. You're absolutely right. But you can't just rely on that continuously. Abiz takes a top position. Nino will find first blood. That's on the backside of Delhi. You do have 3 players in position if you are Enigma to try to rewrap this going back through Hotel. And it seems that the bomb carry there of Ghost is kind of toying with the idea that that might be a possibility. But Augie defensively moving over towards A could possibly deter this push. The bomb is making a move to follow up on Abiz position. Who catches his legs moving on through the side of Cubby. Kill comes out. Numbers good for Enigma. And really at this point, the world is their oyster as Fenrir Rebirth are stuck all the way back into their spawn. Bomb going to freely get planted, you would have to think, here at A. But over towards the backside, it's Fenrir trying to make their way through Mino, and it costs them another life. 3v2 we go with the bomb planet. Going to come by way of a full flank. कुछ फायदा नहीं हुआ ट्रेड ले लिया उन्होंने. Fakes. I mean, both Fakes and Skull Guy have to play so isolated from one another just because Skull Guy needs to find value by range. निकल सकते हैं round. No, Fakes falls. Abiz now controls mid-map. And he can essentially just play point-of-contact defense from here on out. Skull Guy would have to do something immaculate. First shot, not quite going to get the full kill. Tag comes out, and the pistol's in hand. Abiz wants to finish off his prey and will be able to do so, no problem. 6-2, one more for Enigma to find. And it's just the coverage continuously coming through from this Enigma roster, huh? I mean, when they get themselves some semblance of control, specifically Abiz, top bakery, Cal's out, no pressure whatsoever coming through the middle of the map. It's just the world is truly his oyster to play with. Yeah, it truly is. Here we go. Snipers looking for each other. Popping over. Skull Guy gets another first blood. Okay. Chance for Fenrir. Try to get the 3. Skull Guy now has a lot of freedom to work with, knowing there's no opposing scope, but Minho once more. Backside over through Gas is able to find another follow-up. So 4v4 we go. Bomb making a move over through Bakery, looking over towards A, and taking a position here at Vex. He's real far forward. Sniper को भी switch नहीं कर रहा है टीम में. ये क्या मजाक चल रहा है? One player to cross on through KSB in hand. That might just be the idea. Maybe he might wait for a teammate to go top Bakery and give themselves at least a bit of an overwatch to get inside of Delhi. And they do have help here. Is Minho. They are feeling the hot hand to go inside of Delhi. I mean, you got rounds to play with. Wouldn't be a terrible call, but you got a minute left to play. Bomb all the way on the backside of Bakery. I have no idea where Fenrir located at. Not good news here. Not good news here. Augie was on rotation. Mino able to take advantage of the exact right piece of timing. And now you've got Fenrir stuck in the back, but Skull Guy still alive. Oh, nice shot. Immediately called upon. Gets us back to level. 3v3. Ghost with the bomb planted. That's going to be forward. And, ooh, Shaksham, I believe, has picked up the scope that was previously dropped. Over the top of the head, what a shot that is from Ignite. Takes down Ghost. Fenrir, advantage coming through. Skull Guy reads Vex. Now it's just down to 1. Saksham, feeling the pressure. Nade comes out early. Over the cross the middle. Oh, the nade tags. Gets the opener. Oh, how about it? But the bomb gets defused. Could not quite get the kill off the nade. Tagged. And it had the diffuser low, but not quite low enough. As Fenrir do survive to get their third on the board. India साठी किती slots आहेत WC barely above water, still a 3-round teams qualify झाले stage 4 मध्ये त्याच्यामधून फक्त 2 team होईल stage 5 साठी qualify. Back on the Skull Guy, he's got 12 kills to his name. Really just finding these first bloods and making sure that Enigma cannot full flood. But speaking of that full flood, here it comes towards A. Already on. This is the thing about it. The Fenrir have not been contesting the early regions of this A site, but quick route coming out over through number 3. That's Johnson. He's already through and actually can hold off Abiz in the back. He has to watch this flank. So now a pinch can start to unfold. Oh, the shot, though, misses. Doesn't make a difference. Vex able to pick things up, and Mino from the front. Goodness gracious. Doubles up another 2. Fakes on the backside. Finishes off 1, but really needed to get the second. Why are they not using pay to win? So now it's just down to 1. Skull Guy. Of course it is. First shot connects. Over the top of the bomb site. Oh, just misses the shot, and that will cost them the search. Man, a heck of an attempt at a Skull Guy, but Fenrir missed out on a chance to utilize his early first bloods to find too much success. 7-3, the final score.
वो बंदे दोनों को मार देता वो एक rebirth का बंदा. This Fenrir Rebirth roster on their offensive rounds did end up coming through again on their defense. Just way too Last time 4 teams way too much reliability on the back. No, India cha no. Guy again, who's just constantly being that sniper presence, whether that's top grandmas on the balcony, on top of that ladder, watching the middle of the map, trying to keep a bees at bay. And again, as we were calling out continuously. Last time 4 teams stage 4 के लिए थे. इस बार 8 टीम है stage 4 के लिए. But when you give up that much space over by the ASMD, any one of stage the 5 में सिर्फ 2 टीम जाएंगे. You are going to be able to read by way of nades, if not by pressure out from just hard scoping in on that angle over by Cube. And hey, there's nobody on the backside of track. There's nobody over by A. कुछ भी bro. They have all the legendary skins. It works out kindly for them. I think the biggest thing is, outside of Skullguy's ability to find good first bloods, Meta there were 3 rounds that I can think of immediately that Minho found 1v2s or 1v3s, whether it be defensively or right there at the end on the offensive side, shutting down retake potential from the front. Oh bhai, Minho 14 kills. Total kills coming through. On the other side, I mean, Skullguy gets 13, and Fakes gets 9, so like the numbers, the kills, they're there. It's just 3 rounds worth of throwing away numbers advantages. To Minho at the top of the scoreboard was the difference maker, I think, on the opposite side here, giving this Enigma team a chance to close this out in relatively comfortable form at the end. Yeah, and you got to see some shades of that firing range HP, right? Is that, you know, when Minho is getting themselves in isolated 1v1s, 1v2s, hell, even that round where they got an isolated 1v3, it's coming out on top of it more often than not. You know, it's something to be said that when your number 1 player on your roster was Skullguy with a sniper rifle, and albeit I'm here for it. I do love me some good old-fashioned boomstick gameplay. It's just when the follow-up is not there, when you do not have a player with an SMG in hand that is ready, willing, and able to then take that space soon after, you give up way too much map positioning, and a team like Enigma that are playing that much of a faster tempo are just going to gobble that up. And so they did. So with that in mind, next up, Control. Takeoff. Stage 5 मध्ये IND Godel Vitality आणि RNT होती ना last time. I'm really curious to see what Fenrir is going to want to do. Godel Vitality था. Kind of the compositional और एक RNT था शायद से. Wide open map, opportunity to pull out things like LMGs. Not sure 100%. मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी. In your mind, but ये साल में सिर्फ 2 ही जाएगी. Godel कोई भी 2. Like what Nirvana was doing Stage 5 के लिए. Trying to keep them at arm's reach to give yourself a chance to kind of read the or I think that is for me. If I'm wearing the coaching cap, that's what I'm thinking. Is hey, let's get them. You know, let's get some LMGs out. Let's lock down long range, keep them as far out as possible, or at least get good early information, and then rotate around that intel. That would be, I think, the best idea when it comes kind to of bore being able to match up against this Enigma team in the 1-for-1. I'll agree with you, at least pen and paper, but the hesitation that we have seen from Fenrir Rebirth of what we have at least been exemplified is that when they do have the opportunity to be able to get those first few kills, competition they have to be able to execute soon after, to be able to then push forward. Take more map positioning away from Enigma. That has not been showcased so far by this Fenrir roster from what we've seen. At one side the team is too powerful here, and one side is like... down 0-1 here in the Swiss, but I'm more or less looking for the inevitable spawn trap that Enigma might put them in, especially off of that grueling 20-point club we got on the opening hardpoint. Gosh, there's no hesitation here either, Proper. They're just flying across the map. Skullguy's actually trying to snipe, so you want to talk about pulling some long-range ability. He's looking to get things going by way of the scope. I don't necessarily love the call, but, you know, such is life. And onto both zones simultaneously. Go Enigma. Oh, golly, Miss Molly, hold me closely. Not good stuff at the moment here as, oh boy, this is just, yep, Spawn Trap City here, Proper. Statue control, stairs control, just outside of the control. Rebirth negative mein abhi. They're getting themselves just so much pressure going forward. Again, Vex is fishing out just another opportunity to get a time on the backside. This will be also won by Enigma. Of course, find it. 19v22. Looking at this from Fenrir Rebirth again, you gotta somehow get yourself out from the spawn trap. One of these angles needs to be double, triple chowed. Get some of these players from Enigma out from these positions. And you know, I'll eat my words here a little bit. Skullguy's finding some value with this scope. He's cleared out some space. They've brought back the life count. The thing about it is, you're essentially telling me that as you're going to be scoping over the top of these zones, you're willing to fight 4v5 on the zones themselves. There's no smoke. I just don't love the ability to lock down time with that.
So decent clearance initially, but Mino's back on route hitting. Oh my And with God. only a couple of seconds They're getting between spawn trapped. Enigma and an opening defense, it looks inevitable, and so it will be a 6-life lead at They the end of didn't it for even Enigma. keep Dominate the defense. Oh my It took me a God. solid few moments Bro. to fully realize that that was in fact Enigma on the defense, because as Kya I ho showed raha out hai in the beginning ye? of the 10 seconds, they were just fully sprinting at Fenrir Rebirth. And again, you got to tip it to some sort of degree. Yeah, Skull Guy They trying to don't find even value touch for that sniper rifles. Again, the problem objective, still bro, arises I that think. if he's finding picks from range, these SMGs Capping need to be or able some to find different pressure thing from the now. front. Absolutely. And now they It's, did smoke. You know, a little pick and move situation. Find the kill, Finally. open up space, take that space. Skull Guy still rocking the scope. Defense starting to make way through, but look at Enigma. They're Enigma already has to got cap this positions on the backside of B. This is going to open up the middle of the map to possibly use to get some pressure on towards the B zone for tick progress with B's. Not quite able to double up, and with that, proximal spawns for Fenrir will give him a chance to recover B, but A part is now the getting capped. pressure, as the first tick is locked in, starts to go over towards They're Fountain. playing Spilt, I don't know Still why. cycling players in and out from the zone. Keeping that clock stalled out over by a minute. Here comes that aggression. I love to see it. Thank you, Shanton. Oh, nice, nice. Be able to find himself a double kill. Yeah, Mino will be able to trade it out. But you're Rebirth able on to lead get now. Enigma off the zone for now. This could start to get dangerous. If you can get Skull Guy to watch this opening cross, you essentially take away 75% of the map, forcing Enigma to have to hit through This the doorways towards round, B, the which is Rebirth currently what they're can trying to win. do. Kills come out, though, 3 straight, in fact, for Enigma. Offense starting to get out of their spawn and towards the zones. First tick still locked that A, nothing further as we go to 18v18. Chanted in the corner, shut down. And this will allow an opportunity for Enigma to possibly get some progress on both sides at once, but instead they're going to cut to the middle of the map, try to focus over towards B. Kills defensively for Rebirth, solid. Minho inside, yeah, wins that one as well. So all of a sudden he's starting to build up a bit of a streak, 4 in a row. And now Enigma, a chance with maybe some specialists to try to work over and get one of these full zones captured. Slowly tacking on progression over by the A zone. 33 And seconds you left. see Arey, Fenrir come Rebirth. on, There's bro. a lot of Don't focus let coming them over take towards now. that very narrow choke point that does lead over by B from that doorway. They're completely conceding this A zone, which is the right call. You're down at least by a single life, but you want to at least get yourself the setup going over by B. But you have to deal with these lurking Oh, done. and roaming B is also SMGs getting like capped. Mino every single spawn. This There's dude's running no routes. one at B. Bro, Unreal, what but the it just fuck is. Mino, going 19 on? kills. A B's on 15. They're getting spawn Everyone else trapped. just happy to be here. I mean, Skull Guy's got 12 with the scope. It's just... Life finished. Oh, man. I love the idea of it. I'm really इसका flip-flopping मैच here. चल रहा I है see कौन the जीत रहा idea है of it for it's Skull Guy. It's just Enigma versus there's Rebirth not enough participation across the other members. Enigma is flat winning out. currently. This is it. Saw it slightly It's a from control, bro, Shanton, but control. it can't just be 2 players trying to do it all. And if Skull Guy's trying to find pressure with the scope yet again through another round, there needs to be some assistance. Enigma on defense again, letting them have it, not afraid to give up space if they do go down, but the problem still arises. Enigma They have to go भाई down in Mino the तो first पूरा place, ऐसा and Enigma just Scope continuously करके जा रहा pressuring out, dictating the pace in the middle of the map. Annihilator out for Ghost. different trad भाई Once again, just kind of lock in the windows. Yep. Mino's also got his Skull Guy annihilating as well. Just one taps of the pistols coming out through. Mino over towards Cone's not going to find an elimination here, so okay. A little bit of clearance for Fenrir. They've got 1 life advantage for now, but Abiz is still locking down mid-map, which is a big problem, honestly speaking, with these annihilators in play. And, oh boy, as soon as you start to see Fenrir finding space in one position, they're losing it on the other side of the map, and now you're down to 30 seconds, have to make a move. It just feels like Enigma are playing chess while Fenrir Rebirth are playing checkers. Every Yeah, single true. time that there's a route on the backside, it is being exploited continuously. Enigma are down in lives for the time being, but you are down to about 24 seconds. You need to make a play happen. These isolated engagements need to be Rebirth collapsed is on. struggling, And bro. someone needs to trade going on in the backside of the B zone, and Ignite is at least trying to task themselves to do so, pulls out the Annihilator to do so, but it's another 3 dead that comes through. That clock stalled out still, man. nonetheless. You're at 21 seconds. Just look at the left Skull Guy side of the sniper, oh, mini-map. very nice. I mean, you've got Enigma members literally watching Fenrir spawn up. अरे कोई तो दे दो backup And yeah, Skull Guy on the B zone gets 1 tick of progress and a little extra, Ah, but Enigma eventually won. you're just going to get overwhelmed. Okay. No one can get out and in towards the missile silo to help out anywhere. domination or control And which one you Enigma's choose Offensive pressure. control is so bro like you know just sometimes it's over and one-sided surpassed by what they're doing on the defensive side The of this team control. which 12 gets 6, better looking like side a 3-0 in the control and a 3-0 in the series, wins unless actually this mostly. can come down to kills somehow, somewhere I in the choose last domination, 6 seconds. bro. But as you can tell, as my voice starts to trail off, not very hopeful that that's going to be the case.
And the last 10v3 will be the remaining members that will see. You should know that extra different strats for control, like which side is better, which side should be taken first. 3-0 Fenrir Rebirth. At the time of, I think, voting and all. All aggression continuously coming through. And to be completely candid with you, Alan, I'm sure that you're thinking the same thing, that if you're just throwing aggression after aggression, you would almost assume, again, the attacking side is difficult in control map. Arm's length. The issue is that when those defensive is a lot more you easier. always had one lurking player with the KSP in hand that is then taking a further forward position. By that point, if you're looking at it from a Fenrir Rever's stream type अच्छी नहीं है. अरे I know उनका खराब है रे. Players at a time to deal with one player that was inside the spawn just to get out from that spawn trap. By the time that they were going 2 for 1 even in that stature, here come the respawns continuously from the other side of even launch. I'm seeing blur, bro. It just always felt like that it was always just a you one-dimensional check, they are also hit, a streaming. one-dimensional The same. retake coming through from Fenrir Rebirth, and Enigma again exploiting flank after flank after flank. Yeah, tough scenes all around. Bhai, no power. Honestly speaking, and Minoa once again just Light dominating gayi de from start to baba. finish. Flat out, straight domination from those two. So that will take it into the conclusion of our Swiss bracket round number 1 update. Because I know you guys are curious about it. I'm sure you are, because I mean, come on, a lot of you guys are wanting to see what Godlike Esports could do. We revealed the hardpoint scores. KD had finished. gunfight 250 to 70 was the takeoff hardpoint. 7-0 the 7-0 surge 9 destroy and 17 firing 6-15 range, 3-0 the control on standoff. So with that in mind, that now means that Enigma will have a date, very aggressive date, you think, against Godlike Esports in the Swiss round 2. And on the opposite side, of course, with Revenant taking down Nirvana, they will be playing up against Team Vitality. That and more still to come on the day. Again, we've got 8 teams. Only 4 can make it to tomorrow. Nice. And out of those 4, only 2 of those can make it to stage 5. A lot of prize pool money on the line, but of course, representing India at the global stage is what all these teams came here for in the first place. And we'll see who will be one step closer to possibly doing that when we come back after the break and we enter into our second round of Swiss action right here with COD Mobile India. kind of well played होता है कभी कभी. चलो गाइस, पावर गया. लाइट कब आएगी? नो आइडिया. अभी तो टाइम लेंगे, 5-10 मिनट का ब्रेक है. गॉडलाइक मैच इनकमिंग. कौन है? गॉडलाइक वर्सेस आरडीएक्स. इल्यूजन इंस्टा डीएम चेक कर लेना. ओके, ऑलराइट, आई विल चेक इट. क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली गॉडलाइक जीतेगा. गॉडलाइक एंड वाइटैलिटी विल बी ऑन टॉप मोस्ट प्रोबेबली. देखो यार, मेरे को गन फाइट्स ही नहीं हो रही है कुछ टीम से. गन फाइट्स तो आर बेसिक ब्रो. यू कांट चेंज एनीथिंग और एल्स. चलो मिलते हैं. We will meet tomorrow, bro. Like tomorrow will be the triad matches against the top 4 teams. आज तो कुछ लग नहीं रहा है मेरे को ऐसे भी. चलो बाय बाय, मिलते हैं कल. इसको स्टॉप कर देता हूँ. या
चलो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, विल मीट टुमारो। कल करना है तो मेरे को बता देना, वॉच पार्टी, लेट्स सी।